The screen is visible to all of you या light बंद करना पड़ेगा? Light to be off, switch off. Okay. Uh, we'll start with the function, then we'll switch off the light. Once the presentation will start, na, we'll switch off the light. अभी sir आएंगे ना? So once the presentation start, we'll switch off the lights.
A very good evening to everyone present here. Mumbai Customs Zone 1 welcomes one and all to this interactive session on Customs Broker Licensing and Management System. For a brief introduction, I would like to invite Adit Mahato, appraiser, to further start the session. Thank you. Hello. First of all, welcome everyone. Everyone who's sitting here, everyone who's watching us online. Welcome to all for this interactive session. Let me clear two things to you before starting this session. Is we at Mumbai Customs, we very much recognize that this CBLMS portal, which we are actually launching, is a huge transition for you from the traditional day-to-day life, day-to-day working which you guys are used to, okay? And trust me, we are here to handhold you through this transition. We will make sure that all your queries, all your doubts are erased, and the transition is pretty smooth for you as well, okay? It's been pretty topsy-turvy for us as well, but we have sailed through, and we want you to sail through with ease. What we have gone through, we don't want you to go through with that, okay? Without much further ado, I'll just start the presentation. This is a small presentation about what CBLMS is all about, and later on what we are all here for is I'll take you through the process, as in how to register yourself on the CBLMS portal, all right? Rodrix, I need your help, Rodrix. Sorry for that. We'll start with the presentation. I'll start with, this is the basis of CBLMS, what CBLMS is all about. The definition, however, says that CBLMS, which is Customs Broker License Management System, is being developed as a central platform for managing the customs broker licensing processes with end-to-end IT integration and smart automation. All right, now this is a very technical definition. All right, I will not go or bifurcate or dissect this definition, but in a layman language for you to better understand, what we have done is putting up the entire CB section on your computer screen. Okay, जो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो भी काम आप लोग CB सेक्शन विजिट करके आप जो करते थे वो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी कर सकते हैं. इसका एक जिस्ट, इस डेफिनेशन का जिस्ट ये है आप लोगों के लिए दैट वॉट एवर जो भी XYZ whichever reasons you used to visit CB section, after the complete implementation of this portal, you can do anything and everything for which purposes you were visiting CB section, you can do it through this portal. This is a one-stop solution, one-end solution, single window solution for everything. Okay, as the presentation goes along, I'll explain how it happens. There'll be a lot of questions, okay, but let us raise all that as we go along, all right? So the next slide is what are the aims and objectives of CBLMS? The first aim is to minimize physical interface. As I told you that you need not visit custom house for each and everything related to your CB queries or your CB file, custom broker file, you need not visit that. We have aimed to minimize it as minimal as possible for you to visit the custom house or visit the CB section in the custom house for these purposes, for CB section purposes, all right? This is the first and foremost. These are first and foremost objectives or aims, you can call that we are trying to attain these objectives. The second one is uniformity in procedures. Now, what is uniformity in procedures? Now, I believe everyone present here are registered under Mumbai Customs, or they have their primary offices elsewhere and they have offices in Mumbai also. All right, whatever the case may be. For example, what happens is that there is
X procedure. There is some procedure which has been followed in Mumbai Customs Custom Broker section. There is some other procedure which is followed in, say, Chennai Customs House. All right. Now, after the implementation of this Custom Broker Licensing Management System, what will happen is that Chennai will also follow the same procedure and Mumbai will also follow the same procedure. Entire India, wherever CB section exists, all right, these same procedures will be followed. Why? Because the portal is the same. Everyone all over India, pan-India, the same portal will be followed. The same portal will be accessed. The entire CB profile can be accessed sitting anywhere in India. All right? As long as you have your login IDs and passwords, you can actually access this portal. All right? So what will happen is it will actually standardize the process. Standardize for instance, Mumbai Custom House में कोई एक X document लगता है, which is not applicable in Chennai. मैं example दे रहा हूँ. It is not necessary. ठीक है? But अब इसके implementation के बाद में क्या हो जाएगा? It will be followed throughout. जो documents ये मांगता है, the portal asks you for, ठीक है? That will be standardized and it will be uniform throughout India. All right? This is another benefit for you. The third one is timely processing of applications. Now what happens is कहीं ना कहीं कुछ डिले हो जाता है, कहीं पे कुछ फाइल में कुछ होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स पे कुछ प्लेस हो जाता है, लेकिन इधर क्या होगा कि once you upload it, ठीक है, डेटा एक जगह रहेगा. If I want to access, or if you want to access what you have actually uploaded, you can actually upload, check it here. Okay, whatever you have applied for, real time status आपको पता चलता रहेगा कि मेरा किस स्टेज पे ये मेरा फॉर्म है, मेरा अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एक्टिव है या नहीं है, इनएक्टिव है या नहीं है. You can actually access everything through this portal. All right. The another one is accountability. Now the accountability is for the department purposes, not for you. Also for you guys, in a way, आप जब portal access करोगे तो आपकी क्या accountability है वो portal will explain you. ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कैसे देना है, टाइमली देना है, नहीं देना है, जो चीज़ें हैं आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेकर के आपके पेमेंट से लेकर के जो भी चीज़ें, ठीक है, दिस पोर्टल विल एक्चुअली प्रॉम्प्ट यू फॉर ऑल दैट. ओके, एंड यू विल बी एबल टू नो what are your accountability towards customs, okay, or towards CBLR in that respect. The next thing is real-time status update. That is, as I told you, कि आप जैसे जैसे as you go along, वो रियल टाइम आपको बताता रहेगा कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पे अटका हुआ है, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है करके. यू कैन एक्चुअली चेक कि आपने एक बार अप्लाई किया तो कहाँ कहाँ वो फ्लो कहाँ कहाँ जा रहा है. ओके, सो दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. Okay, now the second, the other one, these are the core features of CBLMS. ठीक है, CBLMS में है क्या क्या पोर्टल में. Again, जैसे मैंने आपको पहले explain किया, this is a single window portal. All right. The first one is complete e-communication. Okay, everything. Okay, all the communications are digitized. All the communications, you will be contacted via email, you will be contacted via SMSs, okay? All the digital communications will be there, okay? Your file will be processed online, the file status could be accessed online. So there is, it's a complete e-communication solution processor, okay? You need not actually come along and submit a new letter in a letter format for any reasons. Okay, it will be a complete e-communication processes for you. You can sit at your home and you can access this CBLMS portal. Whatever message we want to pass you along, we will do that via this portal. Whatever submission, whatever communication that you want to do with us, you can actually submit it via the same portal. All right. So this is the one procedure. The second is covers all procedures as per CBLR. Now we are mandated to actually cover this. So we have been successful in doing that. Okay. Right now we have only launched the first module, which is a CB profile module. As along we have, there are the total modules which are incorporated in this CBLMS portal are four modules. As of now, the first module is live. Now, with all the four modules, with the implementation of all the four modules, we aim to actually cover all entire aspects of CBLR 2018. Okay, what all CBLR covers, we actually aim to cover it along with this CBLMS. Okay, everything. Okay, name any section, all the sections will be covered under the CBLMS port. Then again, real-time processing and I've already explained. Reports and archives, you can actually dig up the reports. किसी CB का आपको CB नंबर से उसका प्रोफाइल सर्च करना है, you can actually do that. किसी CB को अपना registered email address पता करना है, you can do that. किसी CB को अपना registered mobile number पता करना है through their CB numbers, if they have their EDI license numbers. Once you have already created your profile, ठीक है? At the time of creation of your profile, you need to have all the data with you.
बट एक बार आपने अपना प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया, एंड आफ्टर दैट इफ यू विश टू एक्चुअली जनरेट अ रिपोर्ट एंड यू वांट टू एक्चुअली सी कि आपने क्या अपलोड किया है, क्या डेटा अपलोड किया है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ऑन अ रियल टाइम स्टेटस, ऑन अ रियल टाइम बेसिस, यू कैन एक्चुअली चेक इट. ठीक है, दैट एक्सेस विल बी गिवन टू यू. आप एक नंबर से एक जेनेरिक एक्सेस रहेगा, जैसे आप जीएसटी में करते हो, आप जीएसटी नंबर डाल के उसका पूरा प्रोफाइल आ जाता है. सिमिलरली आप अपना सीबी नंबर डाल करके या अपना ईडीआई लाइसेंस नंबर जो आता है सीवी का, वो डाल करके आप अपना पूरा प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज द रिपोर्ट्स. इंटेलिजेंस विंडो, अगेन नाउ दिस इज फॉर इंटेलिजेंस विंग्स, not for you guys. Inquiry and adjudication, say these are related to your action matters. So even action matter files are getting digitized, are incorporated in this portal. ठीक है, एक्शन मैटर के लिए आपको सेपरेटली विजिट करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग, द एंटायर प्रोसेस विल बी हैपनिंग इनसाइड द पोर्टल, विद इन द पोर्टल. ठीक है, और जो भी कम्युनिकेशन, जो भी हमको आपको पास ऑन करना होगा, से फॉर इंस्टेंस ऑर्डर्स और एनीथिंग, दैट विल बी पास्ड ऑन थ्रू दिस पोर्टल. ईमेल होगा, कम्युनिकेशन जो भी आपको मैंने बोला डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, इसके थ्रू आपको किया जाएगा. आपका कोई सबमिशन होगा, यू कैन डू इट वाया दिस पोर्टल. ठीक है, सो बेसिकली ये सारे प्रेजेंटेशन का ये इसका एक जिस्ट ये है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आने की कभी कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, से फॉर इंस्टेंस वंस और ट्वाइस, बट हमने उस आपके नंबर ऑफ विजिट को जितना मिनिमाइज कर सकते थे उतना मिनिमाइज करने का ट्राई किया है थ्रू दिस पोर्टल. ओके, आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव कंसेप्चुअलाइज्ड, आपको किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ेगी वंस दिस इज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड. एज ऑफ नाउ, एज आई टोल्ड यू, द मॉड्यूल 1 इज लाइव, we'll go along with that. Okay, features for customs broker. लाइसेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइसेंस आपको एक डिजिटल कस्टम ब्रोकर लाइसेंस इशू होगा. वो आपको मिलेगा पैन बेस्ड यूआईएन. व्हाट इज यूआईएन? इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओके, जैसे एज ऑफ नाउ जैसे आप फिजिकल अभी सीबी सेक्शन में विजिट करते हैं, अलॉन्ग विथ योर सीबी नंबर यू हैव अ फाइल नंबर विथ यू, राइट? आपको कभी भी फाइल निकालना होता है तो आप अपने फाइल नंबर से या सीबी नंबर से करते हैं. व्हाट सीबी, जब CBLMS में ये यूआईएन इज नथिंग बट योर फाइल, योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. Every CB license will have a unique identification number on the successful registration on that particular portal. On the module, एक बार आपने successfully register कर दिया, आपको एक UIN generate होगा. I believe आप में से किसी ने अभी तक register किया है क्या successfully? Anybody has been able to completely register? Hi. Were you able to get a UIN at the end? In the end एक लंबा सा number होगा 14 digit. एक नंबर आया था ना, हाँ, दैट नंबर विल रिमेन विथ यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ योर लाइसेंस. ओके, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन नंबर विद अस. जैसे फाइल नंबर होता है ना, वैसे आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज सेट. QR कोड, हम QR कोड जनरेट करेंगे. QR कोड बेस रहेगा, वो लाइसेंस आप QR कोड स्कैन, जैसे अपना UPI पेमेंट होता है, हम उसको आप स्कैन करिएगा उस QR कोड को, आपका लाइसेंस पूरा एंटायर लाइसेंस कॉपी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. ऑलराइट, प्रोफाइल एट अ क्लिक, जो मैंने आपको बताया कि आप प्रोफाइल अपना पूरा एक्सेस कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेटा. Now policy section wise employee data, digital e-passes and QR codes. Again, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो H कार्ड होल्डर और ये सारे भी आप लोग हर एक पॉलिसी सेक्शन वाइज आप इसमें एंटर करेंगे. ठीक है, एंटर करके आपका डेटा मेंटेन होगा. उनके भी जो पासेज होंगे ना, कस्टम पासेज होंगे, वो भी आपको QR कोड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. वो भी डिजिटली जनरेट होंगे और आपको डिजिटली ही मिलेंगे वो सारी चीज़ें, और उसको भी आप QR कोड के थ्रू स्कैन करके रख सकते हैं. देन अगेन वी हैव एप्लीकेशन. नाउ ई एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप फिल करते हैं, ये सारे फीचर्स आपके लिए प्री डिफाइंड लिस्ट है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, डेफिशिएंसीज है, सबमिशंस है. आपने जैसे फॉर्म भरे, जैसे उन्होंने अभी फॉर्म भर दिया, सक्सेसफुली उन्होंने भर दिया, बट द पॉइंट इज दैट वी विल वैलिडेट इट आफ्टर दैट. व्हाट इज वैलिडेशन इज कि जो आपने फिजिकल फाइल में ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, अगर किसी ने कोई न्यू लाइसेंस लेने आता है देन दैट इज अ डिफरेंट केस, बिकॉज उसका शुरू से प्रोसेस थ्रू CBLMS पोर्टल ही होगा. बट व्हाट अबाउट, आई बिलीव एवरीवन इज एग्जिस्टिंग CB राइट नाउ, है ना, कोई नया तो अप्लाई करने नहीं आया. जो एग्जिस्टिंग CBs हैं, जिनकी फाइल ऑलरेडी चल रही है, उनका क्या होगा? ठीक है, तो दे आर डिजिटाइज्ड ऑलरेडी, उनको हमने स्कैन कर दिया और दे विल बी अपलोडेड इन दिस पोर्टल. ठीक है, उसको आप रख सकते हैं, बट उसके आगे जो आपको जो भी एप्लीकेशन करना है, जो भी करना है, वो सब आप इसी के थ्रू करेंगे. ठीक है, आपने जो फॉर्म भरा, फिल किया, जो भी आपने डेटा दिया, that will be validated with your physical file actually. CB sections में जो officers हैं, they will validate that with the actual file. और जो आपने डेटा दिया है, जो आप अभी भर रहे हो,
CBLMS CB प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, और जो आपने फाइल में ऑलरेडी सबमिट किया उसके साथ वैलिडेट होगा. इफ सम डेटा डज नॉट मैच और समथिंग इज मिसिंग, ठीक है, what will happen, you will get a deficiency memo, okay, to actually correct that, या जो मिसिंग होगा वो आप अपलोड कर दीजिए दोबारा से, ठीक है. नाउ दोज इवन दैट डेफिशिएंसी मेमो विल बी डिजिटली कम्युनिकेटेड विथ यू. वो एक मेमो आपको जो अभी तक मिलता था एक लेटर, वो लेटर नहीं मिलेगा. यू विल आइदर रिसीव एन ईमेल और यू विल रिसीव एन SMS स्टेटिंग व्हाट ऑल डेफिशिएंसीज आर देयर इन योर फॉर्म्स. एंड अगेन टू दोज डेफिशिएंसी, उसका जो आप रिप्लाई दोगे, जो सबमिशन आप करोगे उसके डेफिशिएंसी मेमो के अगेंस्ट में, इवन दैट यू विल डू इट डिजिटली. ओके, उसके लिए भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है. फॉर एनी क्लैरिफिकेशंस वी डू हैव हेल्प डेस्क वेयर यू कैन कॉल. We do have help desk emails which are shared with you where you can actually email those things. Okay, everything needs to be done digitally first. Okay, at the last, I mean, visiting customs house or visiting CB section should be your last resort. ठीक है, मतलब सब कुछ करके आपने ट्राई कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, बट somehow और the other नहीं हो पा रहा है. ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे लोग अभी विजिट कर लेते हैं कि सर हमारा ID पासवर्ड नहीं आया, उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है, बट आप ये सारी चीज़ें आपको पहले डिजिटली प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है बाय एनी मीन्स, तब आप आइए हमारे पास में. उसके पहले आप कॉल करिए, उसके पहले आप ईमेल करिए. हमने सोल्यूशन, अगर हमारा पोर्टल एक डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन वो है प्रोवाइड करता है, तो हमने आपके क्वेरीज की सोल्यूशन को भी डिजिटली बेस्ड किया हुआ है, रखा हुआ है. ठीक है, आपको हर एक चीज़ हमारे पास थ्रू दिस पोर्टल पहुंचानी है. आपका क्वेरी, आपके सबमिशंस, आपके एप्लीकेशंस, एवरीथिंग you need to process it through this portal. Okay, and everything will reach us. We will also process everything that you have submitted digitally through this portal, and reply will be sent to you through this portal only. Okay, as I said in the beginning, we have actually tried to bring the entire CV section on your computer screen, okay, via this portal. All right. Now after this, the real time status, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको SMSs मिलेंगे, आपको email shoot होगा as you go along. किसी stage पे अगर कुछ deficiency रह जाती है, you will receive SMSs, you will receive emails. ठीक है. Data, public search, CB, downloadable, license, contact, employee history, as I told you, आप search कर सकते हो, उधर एक search tab रहेगा. ठीक है, हम अभी live एक register करके देखेंगे. We'll try and do that, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप search कर सकते हो. So these are the features for customs broker, for you guys. All right. Next one. As I told you, CBLMS जो हमने portal है, ये बहुत CBLR incorporates बहुत सारी चीज़ें हैं. There are lot many things which needs to be incorporated in this portal. तो सब एक साथ हम roll out ना करके हम लोग module wise इसको roll out कर रहे हैं. The first one which I've already rolled out, which are already live, is CB profile, जहाँ पे किसी भी चीज़ को, कोई भी CB सेक्शन में किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपकी फाइल की ज़रूरत होती है, राइट. किसी भी चीज़ को आपको कुछ भी देना है, आपको रिन्यू कराना है, आपको कुछ भी करना है, उसके लिए आपकी फाइल की ज़रूरत होती है. हमारे पास अभी पोर्टल पे वो फाइल नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड with CB profile. What CB profile module will do is it will create all the files, and you guys actually have to help us with this because there is an enormous amount of data which needs to be filled in this. Okay? Now you guys, we believe that you guys have all this data and you need to fill in all these data. We also have it, which we will validate it at the next step. Okay? So CB profile will create each and every CB's file in the portal. And उसके आगे का प्रोसेस, once the profile is created, then the next step और उसका अगला स्टेप आगे चलेगा. ठीक है. So as we go along, module wise ये develop होता जाएगा. We are expecting to launch all the modules pretty soon. Maybe we don't have a timeline as of now. I can't commit, but pretty soon. By the second module which we are gonna implement is the e-applications. एक बार आपका प्रोफाइल बन गया, देन उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशंस उससे मिसलेनियस जो भी डालते हो ना, फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, फॉर चेंज इन एड्रेस, फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऑथराइज पर्सन आपको चेंज करना है इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, आपका अगर ऑथराइज पर्सन चेंज करना है उसकी रिक्वेस्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट विच यू एक्चुअली मेक इन CB section based on your current existing license, all requests can be made or can be processed through that e-application module. That is the second module. Third module is offense module, which is offense management. Say for instance, आपकी सारे action matter file से related जो भी चीज़ें, that will be launched via offense module. That is our third module.
The fourth module is your new license, intimation, and other functionalities if you wish to apply for a new license. Okay, these sort of things, new license, intimation under form C, say I believe it's a 7.3, ठीक है? If you want to register under 7.3, वो भी form आप process कर सकते हो. आपको license surrender करना है, that can also be done via this portal. So all these things we are planning to actually launch under module 4. The fourth module will actually enable you to do all these things. Okay, so these are the 4 steps. We are on the first module right now, that is CB profile module, right? Okay, thank you. This is it about the CBLMS portal. इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो whatever I have told you, okay, our portal pertains to all of that and much more. But then again, I cannot put down all of that in a presentation. You need to actually experience it. It's an on-hand experience. Unless and until you experience it, or you start registering yourself, or you start using it, okay, you won't be able to actually gauge the benefit by my presentation, what all benefits it is going to give to you. All right. Should we start launching something? I mean, registering an ID. Do you want? I'll use a dummy data. Okay. I'll use a dummy profile to do that. Can we log in? Can we log in? Yeah. Try that. No, try now. Try the website. I believe आप लोग को URL पता है. All of you know the URL. The URL for launching the website on your browser is cblms.gov.in. Yeah, it's C for customs broker, CB, license management system, licensing management system. So it's cblms.gov.in. Yeah, sure. Should I repeat it? Okay, yeah. It's C for customs, B for broker, L for licensing, M for management, S for systems. So it's cblms.gov.in. Okay, is it okay if I explain to you via screenshots? I already have screenshots. Okay? I believe there is some issues with net. Okay. Go with the first page. The first one. Zoom in? Yes. Zoom in. Can you zoom in? Control and up. Okay. To be honest, this is, I mean, once you try to access cblms.gov.in, this is not the very first page which you will see on your screen, okay? The first page will actually have a picture, the background will be the same, okay? इस table के पीछे जो background है, background ऐसा ही रहेगा, ठीक है? On the first page, without even login, you can actually access 4 things. You can actually access many things, but 4 things as of now is of your importance. कभी भी आप CV प्रोफाइल मॉड्यूल जब आप रजिस्टर करने जाएंगे, उसके पहले आप 4 चीज़ें हैंडी रखिएगा अपने पास में. Please download all that and keep it handy with you. Okay. 2 things. First thing is user manual. Okay. आप यहाँ से जब जाएंगे, आप you please try and log in. आपको स्क्रीन पे फर्स्ट पेज पे सामने ही दिखेगा यूजर मैनुअल. ओके, यू डाउनलोड दैट थिंग. द फर्स्ट थिंग इज यूजर मैनुअल. It's a step-by-step explanation of, along with the screenshots, as in how you can register on this module. Okay, what I am explaining right now, everything is explained in that user manual, along with the details. Okay, so first thing that you need to download is user manual.
Okay. The second thing that you need to download is FAQs. That is Sanjeev Harale, sir. I would like you all to request you all to please welcome Shri P.K. Agarwal, sir, Principal Chief Commissioner of Customs, Mumbai Zone 1, on stage. Shri Deepak Sharma, sir, Additional Commissioner of Customs. Shri Dushant Malani, President BCBA. Shri Ashok Chakravarti, Deputy Commissioner of Customs. I would now request Shri Dushant Malani, President BCBA, to felicitate Shri P.K. Agarwal, sir, with a bouquet of flowers. I would request Shri Sanjeev Harale, sir, to felicitate Shri Deepak Sharma, sir. I would request Shri Paresh Thakkar, sir, to felicitate Shri Ashok Chakravarti, sir. I would like to request Shri P.K. Agarwal, sir, to say a few words. Shubha Prahan, good afternoon. Shri Dushant Mulani ji, President BCBA, and all my esteemed members of BCBA community and members of the importing and exporting community. As whenever I meet you, I normally speak less and promise more. You must be noticing that I speak less and promise more. So, because I consider part of you as a major service stakeholder in the customs fraternity, importing community, customs broker, and we as a customs karmachari. We call it customs sevak, Seema Sulk Sevak. Lot of things have been done, lot of initiatives have been taken, implemented in last at least 25 years when we started EDI, and we celebrated 25 years of digitization and electronic method of assessment in 2021, 25 years of EDI. In that process, we always focused on clearance, of course, import and export clearance, that is cargo clearance. But the human element on department side, on the custom broker side, somehow it got missed, because naturally we were focusing on first cargo clearance, that is a bread and butter for you and bread and butter for me as a national exchequer, as a resource mobilization person for Government of India. So we focused more on that.
Same time, we have taken many facilitation measures to improve our ranking in ease of doing business. Now, one process which was left out, and I had perceived when I was Joint Commissioner, then they had come, I think some of the members I remember, for that digitized issue of the smart card to the custom broker for entry to the custom houses and the docks premises, which we had initiated, but somehow it could not take up that time. Then when again I became Commissioner General, then we also thought of the same thing. But in holistic form, as a one national platform, as a one major digitization process for the customs broking community as a whole in India, that was not thought of before 2019. 2019, and we were fortunate enough in 2020, we had a Chief Commissioner here who is now the chairman of our fraternity, Customs Fraternity, CBIC, and he knows ins and out of Mumbai Customs. He understands the pains and pleasure of this custom house, challenges of the customs broking community, and the issues faced. In that process, which we started in 2019 as a concept note, that customs brokers license management system we have to create, and all the processes related to the custom broking business, so far as me and you are concerned, has to go online. Everything has to be on digital platform. No physical contact. No physical contact means it is not that I am not available for you or you are not available for customs. Physical contact means in day-to-day processes which you write from the application to conduct your business as a custom broking, issue of license, apply for the passes, change in application of your directors, managements, and then some offenses if here and there committed by you, that management we wanted to a dedicated, trustworthy and transparent mechanism on e-platform, and which has seen the light of the day on 1st of this month, and we have started a tiny step of digitization process and a project called Cblms, Custom Brokers License Management System on e-platform, with the initiation of the basic data. And basic data, who will provide that? You people will provide. So basic data we have asked for, and that data is being fed. Till yesterday evening when we were having a presentation before the full board meeting, you see, you can understand the importance and the custom broking community and the importance of this project by the CBIC community, by the Ministry of Finance, that me and my team, my Principal Commissioner General, who even could not come because there is some other legwork he is doing in Delhi. So we had to present for the full board, chairman and 6 members of the board, that this is the way we are going to do it. There were some suggestions, we are going to implement that. But to implement that, I need your support. Dushyant ji and chairman directed member customs that Mumbai Customs Zone 1 is the process owner of this project, and so Mumbai Customs Zone 1 is given the responsibility for implementation throughout India. So being a part of Mumbai Customs Zone 1, BCBA has the equal amount of responsibility to get it implemented all over the country. Second, board has said now onwards, I will rewrite 2 letters, one to your federation, that is FFAI, and one to BCBA, and rest everything has to be done by Mumbai Customs and Mumbai Customs Broking Community. I am happy that till yesterday evening, I think 54 customs brokers have successfully uploaded their profile in our module. We call it module 1. You must have seen the various modules which we are going to develop. I think presentation, that basic features of the presentations, advantages, transparency, real-time basis, your tracking, you can get SMS even if you apply today, you don't know, you have to move around the office and officers. 10 दिन के बाद आप कल आइएगा जी, आपको अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ.
and you never know what is the status of application. आपके पास SMS जाएगा, आपके पास मेल जाएगा, स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि स्टेशन आपकी DC के पास पेंडिंग है, AC के पास पेंडिंग है, या क्लर्क के पास ही पड़ा हुआ है, TA के पास ही पड़ा हुआ है. All these transparent measures we have taken. And not only that, the beauty of this, my officer must have explained to you, this project is not only you and me only interaction. It is a process that what we will process in that system itself. हम फाइल भी उसी में खोलेंगे, और सारा रिकॉर्ड है, अलग से फाइल हम नहीं खोलेंगे. अब all files will be opened in the system only. Everything will be transparent on real time basis. I need your cooperation. I need your active cooperation in this matter, all members. आज शाम तक कितना हो गया था सक्सेसफुल अभी तक? 60. So with this, we have opened on one. I know that initial difficulties are there, glitches are there. You also need to understand. Today is 12th day. Slightly, yes, expectations of my seniors, my board is more that at least in Mumbai by this time you should have completed 1200 entries, 1200 onboarding. I said, sir, we are trying our hard and I am going to meet. I promised this time. I was with the chairman yesterday. I said, sir, within 24 hours I am going to meet you people to address their queries, their issues, and my expectations. I want to, expectations means ultimately it is going to benefit you. Me as a department, it is going to benefit that at least I can tell that I have done this in a transparent. This process is very transparent and we are efficient officer. इतना मैं claim करने के लिए at least वो advantage मेरा है कि we are doing it for, हम अपनी efficiency बढ़ाने के लिए भी we are doing this work. Now, member customs has completely, board has completely bestowed the responsibility on this zone, and one letter has been written yesterday itself after the meeting in the late evening by member. I'll just read in the name of, I think you must have received in mail. You received, I am reading the letter which has been written to your federation by my member. I think he must have received by this morning. Dear Shankar Sinde ji, this is from my member customs, Sri Rajiv Talwar ji, from Delhi has written, establishment of a pan-India customs brokers license management system is an initiative of the Central Board of Indirect Tax and Customs for infusing Turant processes of faceless, contactless and paperless interactions to better service the customs brokers community. CBLMS is envisaged as a single portal accessible to all jurisdictional commissioners all over India, which license customs broker for automating all related work, automating related work management processes of customs broker and their card holders. To start with, an initial module for creating a custom broker's profile had been opened locally at Mumbai, in which 54 customs brokers have successfully onboarded with their documents data. For this purpose, detailed SOP and FAQ for guidance were placed on the web. You must be knowing that on the cblms.gov.in, there is already a guidance note, there is a detailed SOP if you have any problem. And we, just now my Deputy Commissioner informed me that we are also preparing a video, so that like कई जगह आप देखते होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वीडियो होता है, ये होता है, हम लोग भी एक वीडियो आपको उसी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको हो, वीडियो में सारा आंसर्स मिल जाएगा कि कैसे भरना है आपको एप्लीकेशन में, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. दैट वीडियो विल बी रेडी बाय टुमारो इवनिंग. Yes, or by Friday we will give you that video also. These profiles which has been uploaded in Mumbai Customs, these profiles are now being taken up for validation. The Principal Chief Commissioner of Customs Mumbai Zone 1 has been officially entrusted with the responsibility as a process owner of CBLMS and to resolve any issues. So now he has written to you people to resolve, so that now my responsibility increases, that I am duty bound to resolve any issues faced in implementation of this project. I am responsible for that and I am committed to that. Resolve any difficulty and issues. Mumbai Customs Zone 1 shall now be taking next step by opening this initial module to all members of their customs broking community in India to onboard their profile data documents on CBLMS. In this regard, each jurisdictional policy licensing section
will, in coordination with Mumbai Customs Zone 1, issue suitable public notices, which we have issued a public notice on 16th, which we modified on 30th or 1st. We issued on 1st, that is a Saturday, I remember, 1st of this month. Similar public notices will be issued within a day or two by other commissioners at other stations for your members there. Taking into account that the FFI has been the key partner in reform, the Federation is requested to reach out to all 28 member customs broker association and their 6,500 customs broker members all over India for quick and successful onboarding their profile. Why it is important? Member has written to FFI and BCBA. Without onboarding you, without knowing you, means basically data is what? When you got the license, what is your educational position, how many employees are working, all these details unless you give. Tomorrow you want to change the status of your employee, you want to induct a new employee, you want to remove. Unless it is in the system, how can you remove? System will not work. So this basic data about your telephone number, your mail ID, everything has to be fed. He must have explained to you there are around 300 data fields, around 20, how many documents? It looks but it is very easy, that I can tell you. Once you start doing it, हम अपने बच्चे का आज application form भी file करते हैं, हम अपनी passport file करते हैं, you know how we do it. जब बैठते हैं तो 15 मिनट आधे घंटा में हम कर लेते हैं. हम तो रोज नहीं करते हैं, लेकिन this business we are doing since last 40 years, 50 years, 100 years, some of them are more than 100 years old. So please cooperate in implementing this project, because full implementation of this project we have committed to Government of India that we will do it by end of this year 2022. So that in new year we will go with the new phase, that is on e-platform, with new step, new vision, new energy, new methods of working. So thank you very much. If you have any queries, my team is there. I once again thank you very much and seek your support and cooperation in this ambitious national level project being implemented by you and me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now I would like to invite Shri Dushant Malani to say a few words. माननीय प्रमोद अग्रवाल जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, आदरणीय दीपक शर्मा जी, अशोक चक्रवर्ती जी and all the dignitaries here, members of trade, custom brokers. Respected sir, thank you for your wonderful address. This was the steps what Customs Department and CBIC has taken in digitization. Post-COVID, it is exemplary and no other stakeholders has ever taken so many steps. And we compliment wholeheartedly CBIC for that Mumbai Customs Zone 1. Thank you, sir. It was a very interesting launch, sir. Mumbai definitely being the prime commercial center of the country, commercial capital of the country, it was chosen as a pilot site. We were having AGM of our federation on 30th of September. We had a wonderful presentation by Shri Ashok Chakravarti sir. He came there, addressed our All India gathering. And at 7 o'clock we get a phone call, no, this has to go live. All of us were there in the gathering. The team came out here to our very pleasant surprise. We find that entire team of Mumbai Customs Zone, led by Shri Deepak Sharma ji, standing here. And we were there till 3 a.m. in the morning and getting the thing done. And I have never even seen any private sector putting that much effort. Kudos to your team, sir. We have learned a lot with your energy where that is flowing in. Principal Commissioner General Shri Sunil Jain sir was online constantly till 3 a.m. in the morning, asking about each and every minutest of the details.
point is, yes, there will be difficulties. BCBA, I have our past presidents and the entire team out here sitting. They are so much concerned, each and every of them, that the team has set up 24/7 interaction. Every day our team is out here with the CB section, asking about minutest of the details, interacting with member. We have compiled, in fact, while we were doing this, Mr. Pareshji has compiled whole list of difficulties that were faced, how they are being solved. So our team is working and it's totally integrated with customs team. There are difficulties being faced about old results, the old certificates, security deposits not being there in the section and with the CB. So yes, we are working proactively. This will be resolved and we will set an example for the entire country that yes, Mumbai Customs Zone and BCBA has showcased how this can be digitized, how it can be done, and we would seek your and entire team support for resolving these queries. And one request that setting up of our nodal officers, which Deepak Sharma ji and Ashok ji have already assured, we will publicize to the entire community out here. Our team is also, we have also set up a nodal team in BCBA. We'll work together, ensure that each and every member, 2,300 members, our handholding is done and the registration in does ASAP. And to our pleasant surprise today, sir, we had initially sent this communication for this program. We found that 259 members have turned up. In fact, more wanted, but paucity of space, we closed the registration. So members are ready to go on board. And with your support, blessings and guidance, we'll do it. Thank you, sir. Thank you very much, everybody. Let me tell you one more thing which I forgot to mention. Since Dushan has already said that, we have gone online at least in respect of 60 customs orders without whatever difficulties initially faced, that difficulty at least your other members should not face. So what has been requested what has been requested by the board, that these 60 as on today which has successfully been onboarded will work as a resource person for the whole country. So I request Dushan ji that those 60 list out, allocate them to various stations, like 2-3 of them can be say if any difficulty from Calcutta, they will contact us, they will contact officers. बट जो बोलता है ना कि भाई भाई से जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो दो 2-3 कस्टम ब्रोकर यू एलोकेट टू चेन्नई, 2-3 टू कलकत्ता, 2-3 टू नागपुर, 2-3 टू पुणे, दिल्ली, लाइक दैट, सो दैट आपके किसी भाई को, किसी मेंबर को अगर तकलीफ हो तो पहले वो आपसे बात करें, बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड. यू नो हाउ यू हैव, आपको डिफिकल्टी आप अपनी भाषा में अपनी तरह से समझाओगे, दे विल अंडरस्टैंड. हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमको एक डायरेक्शन की तरह वो लोग लेते हैं. आई एम टेलिंग यू, बट आई एम नॉट लाइक दैट. माय ऑफिस, माय टीम, यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद देम. हम अगर बोलेंगे तो आप उनको एक डायरेक्टरी लेते हैं. मैं चाह रहा हूं हम डायरेक्टरी मेजर नहीं ले, हम कंसिलिएटरी मेजर लेना चाहते हैं. तो पहले आपसे शुरू करें. आपको कोई डिफिकल्टी अगर आपके मेंबर्स को कलकत्ता में, तो हमारी कलकत्ता की टीम लाइव हमारे टच में, हमारे दोनों अफसर के और हमारी पूरी 8 लोगों की टीम है डेडिकेटेड, विच विल वर्क डे एंड नाइट. बट दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी सक्सेसफुल. इस मिशन मोड में हमको काम करना है. और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर ये 2022 का डेडलाइन मिस हो गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. आई एम टेलिंग यू, वेरी डिफिकल्ट. उसका रीजंस मैं कभी दूसरी मीटिंग में आपको बताऊंगा. तो प्लीज एंश्योर टू ऑन बोर्ड, क्योंकि आप एक बार अपने डेटा, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है उसके बाद प्रोसेस को चालू करने की. नहीं तो कल आपके ऊपर ये इल्जाम या आपके ऊपर ये बदनामी ना आ जाए कि भाई आपने तो डेटा ही नहीं डाला, हम कैसे ऑन बोर्ड करते, कैसे हम ये प्रोसेस चलाते. प्लीज डू दिस. 60 persons, you distribute them to all over the country, 28 stations, 2-3 आदमी को. इफ दे हैव एनी डिफिकल्टी दे कैन कॉन्टेक्ट. आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए BCBA से, और वो आप हमको एक उसकी कॉपी दे दीजिए सर्कुलर की. आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए,
अपने यहाँ जो भी आप लोग बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, और वो 2-2, 3-3 आदमी को हर स्टेशन अलॉट कर दीजिए। उस स्टेशन के आपका जो एसोसिएशन है थ्रू FFI आप उनको भेजिए, एक कॉपी हमको दे दीजिए, और वहाँ के कंसर्न कमिश्नर को भी बोल दीजिए। आई वांट दैट कोई भी कॉर्नर से आपको हेल्प की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके मेंबर को नहीं, यार मेरे को तो पता था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है बट मुझे आता नहीं है, हम वो भी आपको अपने कस्टम ऑफिस में बैठा के कराने को तैयार हैं, कंसर्न कस्टम ऑफिस में। लेकिन विलिंगनेस एंड कोऑपरेशन आपकी जरूरत है। डोंट मिस दिस बस नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड आई दिस माय टीम, आपको मैं ये गारंटी देता हूं, इफ इट हैज बीन इंटरेस्टेड टू मुंबई कस्टम्स जोन 1 and which I have taken on me, I have taken on me with the clear belief and faith in my team led by Mr. Sharma ji and Mr. Sunil Jain ji, Ashok and other members who are working since last, I think May se to kaam kar hi rahe hain, all these officers since May this year, because we got financial sanction in the month of May. I am not hesitant to saying that we have spent lakhs of rupees on this project, Government of India. This should not be drained out, it should be used gainfully in the public interest. और ये टीम पूरी इंडिया का भार लेने को तैयार है। और ये टीम इंडिया में, मैं बताता हूँ, ऐसी टीम आपको कहीं, हम पूरी उनको ट्रेनिंग देने को भी तैयार है, हमारे ऑफिसर्स को, उनको बुला रहे हैं। अभी इनको एक पता चला, एक डीसी बोल रहा है, यार हम तो कमिश्नर से आपने बात की, हमें तो पता ही नहीं चला, CBLMS अभी तक फंडा ही नहीं समझ में आया। We are said by tomorrow evening you will know. I am taking their video conference tomorrow itself, not losing even a day. आपको क्या समझाना है मैं समझाऊंगा कल, हमारी टीम आपको कल समझाएगी। जब हमारी इतनी तत्परता है, इतनी हमारी अर्जेंसी मैं दिखला रहा हूं, तो प्लीज यूज दिस अर्जेंसी, यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। Leave the floor to Ashok and Sharma ji to resolve the issues. I am always available on second floor. If anything is there, most welcome. Okay? So I am not coming in between you now. Okay. Okay. I request everyone to settle down, please. In the back, Please, everyone to settle down. Okay, shall we continue? Okay. Well, that was a pleasant break, I guess. Okay. Okay, I was telling you before Sir came, I was telling you, in order to do the registration, before doing registration, there are 4 main components which you need. In fact, 5. I'll name 4. The 5th one, I believe there is some issues that you guys are facing. The 5th one is nothing but the username and passwords. Today, Manohar ji has actually passed on a list where you guys have entered your queries, as in what problems you guys are facing. The most prominent, I would say, out of those 200 queries, I would say 100 queries were about that they have not received their user IDs and passwords, right? So first of all, user ID and password is a system-generated user IDs and passwords. Your user ID will basically be the PAN number, your PAN number, which you have registered against your CB license on IceGate. All right? Now, what about the password? The password will be sent to you on your registered mobile number. The mobile number which you have registered on the IceGate against your license, against your CB license.
That on that particular mobile number, you will receive an SMS which will have your usernames and passwords. Also, when you will try and log in into the portal, okay, you will use your username and password. Once you click on submit, you will be prompted to enter OTP. OTP, which is one-time password. Now, where are you going to receive that one-time password? That's again on the same registered mobile number which you have entered in IceGate. Okay. Now, regarding your query, again, as in you guys have not received your username and password, we are in a process to resolve that. By the end of today's presentation, I'll share with Manoharji a Google spreadsheet. Okay. I believe he'll share it with everyone. And I request everyone, each and every one of you, who is facing this problem, who has not received their username and password on their registered mobile number, kindly enter your data in that spreadsheet. Okay. We'll have that particular data in the spreadsheet. I believe few of you have already emailed on the help desk email as well, expressing your concern. Okay. We are also compiling all that data from email. But if you will take some effort and actually enter that Google spreadsheet, it will be easier for us to compile the entire data, and then this problem can be resolved at one go. Okay. So this was the fifth element. Now I was talking about 4 elements which you need to keep handy before logging into the portal. The first one, as I told you, is the user manual. Okay. As I told you, इसके जो आप पहला screen जो आप cblms.gov.in enter करके जो आप open करोगे, on that एकदम center में there will be 2 tabs. One is user manual, second is CBLR 2018 की पूरी copy है. It's a PDF copy of PDF file, sorry, of both the things. The first thing that you do is you download user manual. Okay. उस user manual में step by step आपको इस presentation की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. That उस user manual में everything is explained in detail, as in what documents you require, at what step क्या fill करना है, किससे related वो चीज़ें fill करनी है, at next step what you need to do. Everything is explained along with the screenshot in that user manual. First thing. Okay. The second thing I told you is the FAQ. ये नीचे जो आप tab देख रहे हैं, just below the help desk. Rodrix, zoom in on the help. The second one is the FAQ. Okay. आपको during the registration process किसी भी tab पे, किसी भी section पे कोई भी query अगर आती है कि इसमें मैं कौन सा data fill करूँ, इसमें मैं किसका data fill करूँ, please refer FAQs. ठीक है. We have actually tried our best to incorporate all the possible questions जो आपको आ सकते हैं at the time of registration, whatever questions that you might have. ठीक है. But then again, I'm pretty sure कि 100 of questions have left. Okay, तो आप उसको please raise करिएगा. आपको अगर ऐसा कोई नया question आता है, please आप send an email to our help desk email ID. ठीक है. We'll incorporate that in our FAQs again. Okay. So now the second thing is help desk. There are 2 more documents which we have already shared. I believe if it is okay, please share with everyone. The third document is nothing but there is a list of all the details which you need to keep handy before starting the registration process. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं हो कि once you have started the registration process, बीच में आपको पता चला कि अच्छा ये डिटेल भी फिल करना था, ये डिटेल तो मेरे पास है ही नहीं. Say for example, if you are registered under 72 in Mumbai, but आपका पुणे में भी ऑफिस है. ठीक है. You have employees in Pune also. You have authorized person in Pune as well. Okay. So we need their details as well. All right. तो आप जब registration करने जाओगे तो आपको उसकी भी details पूछेंगे at one section. तो ये सारे details आप पहले collect करके, अगर आपको उनसे फ़ोन पे लेकर पूछना होगा, उनका ईमेल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका एड्रेस डिटेल्स, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट की कॉपी, एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल. तो मैं व्हाट आवर सजेशन विल बी इज बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज गो थ्रू दैट लिस्ट की कौन सी डिटेल्स आपको फिल करने हैं. प्लीज गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, दैट्स द थर्ड डॉक्यूमेंट. Okay, I'll just show you the document, 1 second.
ओके, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, इन द मीनवाइल वो फिगर आउट करता है हाउ टू पुट दैट ऑन द स्क्रीन. ओके, एक पीडीएफ फाइल है जिसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि कौन से डिटेल्स आपको पहले से हैंडी रखना पड़ेगा. दिस इज द थर्ड थिंग. द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू कीप हैंडी इज अगेन अ डॉक्यूमेंट. एक और एक पीडीएफ फाइल है विच इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच नीड्स टू बी स्कैन्ड एंड केप्ट रेडी. ओके, उस डॉक्यूमेंट्स में उस लिस्ट में हर वो एक डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू स्कैन, और उसके आगे उस डॉक्यूमेंट का नाम है और उसके सामने और 2 कॉलम बने हुए जिसमें उसका टाइप. से फॉर इंस्टेंस कोई डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको, हाँ ये आपकी स्क्रीन पे है. दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिटेल्स. ओके, दिस इज द लिस्ट ऑफ डिटेल्स विच एक्चुअली नीड टू कीप हैंडी बिफोर डूइंग दिस. ओके, आप जब स्क्रीन ओपन करूंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीबी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल फिल करने का प्रोसेस हमने काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. जैसे स्टार्टिंग विद सीबी प्राइमरी डिटेल्स, देन ऑथराइज पर्सन, देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐसे करके बहुत सारे टैब्स हैं. तो हर टैब में कौन से डिटेल्स आपको फिल करने हैं, ये डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके, दिस इज वन थिंग. आफ्टर दिस द सेकेंड डॉक्यूमेंट और द फोर्थ डॉक्यूमेंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो एक टेबल है. ठीक है, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. That is list of supporting documents. Okay, supporting documents which you need to actually keep scanned and keep ready before registering. आप किसी कॉलम में जाएंगे, आपको वो अटैच करने बोलेगा, तो आप उसको पहले से उसको स्कैन करके जो फॉर्मेट उसके सामने लिखा हुआ है और मैक्सिमम उसका जो साइज हो सकता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम साइज लिमिट वो भी दिया हुआ है. ये देखिए, दिस इज द वन. से फॉर इंस्टेंस सीबी प्राइमरी डिटेल्स जब आप फिल कर रहे हो तो आपको आपकी जो लाइसेंस कॉपी है उस लाइसेंस कॉपी को आपको स्कैन करके रखना है ना. उसके सामने अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट स्लैश साइज दिया हुआ है. ठीक है, तो फॉर्मेट इज वॉट एवर फॉर्मेट, आइदर दैट कॉपी नीड्स टू बी इन पीडीएफ or that copy needs to be in JPG format, that copy needs to be in JPEG format, whatever format the copy needs to be, वो format दिया हुआ है. Slash उसका size दिया हुआ है. The size means the maximum size जो उसका हो सकता है, उससे अगर exceed होगा then portal will not accept it. आपको उसको reduce करना होगा, then reduce that and then upload it. Okay? So ये 4 चीज़ें, user manual, FAQ, list of details which you need to keep handy before entering or registering, and then fourth is list of supporting documents which you need to keep scanned and keep ready with you. Okay, and then you start the registration process. My sincere suggestion will be, please do this exercise. आपको बहुत easy लगेगा. अगर आप देखिए, हमारे पास में जैसे सर ने अभी बताया कि we have 60 CBs which are successfully registered themselves on the portal, but not only 60, I would say 200 CBs have already started the process, but at some of the other junction, मतलब say for instance एक टैब भरा, फिर दूसरा डिटेल्स भरना है, बट उनके पास वो डिटेल्स ही नहीं था, कोई कॉलम में भरना है, कोई वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था उनके पास में स्कैन करके रखा हुआ, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया. ठीक है, फिर आपको you have to come back to that again, you have to keep all the documents ready and then you have to come back to that, और फिर से आपको फिल करना है. तो 200 लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन 60 लोग ही कंप्लीट कर पाए. ठीक है, बट इफ यू विल फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप, सारे प्रोसीजर को अगर ऐसे फॉलो करिएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. इट्स अ मैटर, मैं आधा घंटा तो नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आई वुड से 1.5 आवर. जो दुष्यंत जी बात कर रहे थे ऑन 30th रात को, जो हम लोग 3 बजे तक थे, वी टुक अराउंड 1.5 आवर टू रजिस्टर 1 लाइसेंस, बिकॉज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रखे हुए थे, पहले से तैयार थे, सारी चीज़ें स्कैन करके पहले से तैयार थी. ठीक है, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, स्टार्टिंग द registration process. Okay, okay, now this is the screen which I was talking about. ये पहला स्क्रीन है. जब आप this is the first screen. Okay, जब आप अपने ब्राउजर पे cblms.gov.in टाइप करके एंटर करते हैं, then this is the first screen which you will see. ठीक है, now what's new जहाँ पे लिखा हुआ है ना, what's new, अगर आपको दिख रहा है, जस्ट उसके ऊपर देखिएगा तो एक यूजर मैनुअल लिखा हुआ है, छोटा सा एक स्क्वायर बना हुआ है, दैट इज अ यूजर मैनुअल और CVLR. आपको वही यूजर मैनुअल डाउनलोड करके रखना है रजिस्टर करने से पहले. ठीक है, नाउ हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इज ऑन द राइट, ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इफ यू सी देयर इज अ टैब लॉगिन. ओके, you need to log in on that tab. You need to click on that and you need to click on that. इस पेज पे आ जाइएगा आप, यहाँ से आप लॉग इन करिएगा. ठीक है, now what are the credentials जो which I talked about, the fifth element, जो मैसेज आपको आया था on your registered मोबाइल नंबर. अभी एज ऑफ नाउ हम SMS सेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके जो आइसगेट पे जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस पर आपको SMS आएगा विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. यू नीड टू यूज दैट. ठीक है,
अच्छा, द सेकेंड स्क्रीन जो अभी था, दैट वाज द OTP स्क्रीन. ओके, दैट वाज वन टाइम पासवर्ड स्क्रीन. गो बैक, लॉग आउट एंड या ओके. जब आप यूजर नेम और पासवर्ड जब आप एंटर करोगे और जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, द नेक्स्ट पेज विच विल ओपन विल बी अ OTP, जहाँ पे आपको OTP फिल करना होगा. अगेन OTP यू विल रिसीव ऑन द सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जिस पे आपको पहला SMS आया था यूजर नेम और पासवर्ड का, उसी पे आपको OTP भी आएगा. ठीक है, वो OTP आप जब आप एंटर करिएगा तब आपको ये पेज नहीं, इससे भी पहले एक पेज आया था. ये हमारे पास में डमी अकाउंट है जिसपे ऑलरेडी थोड़ा डेटा हमने फिल करके टेस्ट किया हुआ था, इसके लिए आपको ये पेज दिखाई दे रहा है. अदरवाइज इससे पहले ऐसा कुछ पेज आएगा. ऑलराइट, नाउ ऑन दिस पेज बीच में एक ग्रीन कलर का मोटा सा बटन आएगा विच विल बी रजिस्टर CB प्रोफाइल. ऑलराइट, डू वी हैव इट इन द प्रेजेंटेशन? ओके, ये वाला स्क्रीन आएगा आपको. ठीक है, इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हो पोर्टल पे, दिस इज द स्क्रीन दैट यू विल सी. ओके, जो स्क्रीन आप देख रहे थे दैट इज फॉर द सेकेंड प्रोसेस, जहां आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया बिकॉज आपके पास कोई डेटा नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो आप स्कैन करके अपलोड करना चाह रहे थे. ठीक है, बट यू डिडंट हैव इट, सो यू हैव टू लीव इट मिडवे. बट आपने जब दोबारा लॉगिन किया, अगेन लॉगिन प्रोसेस तो सेम रहेगा. यूजर नेम पासवर्ड आपको वही करना है जो आपको SMS आया था. फिर आप साइन इन करोगे, OTP आएगा, OTP डालोगे, साइन इन करोगे, तब आपको वो पेज दिखाई देगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन वो पेज में क्या है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू डू, this is the page that will open. You have to click on register CB profile. Okay, that is the first step to register your profile on CBLMS. Okay, yeah. Okay, once you click on register CB profile, this page is gonna open. Okay, अभी आप देख रहे हैं आप इस पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, the first tab is CB primary details, the second one is security deposit, correspondence address, authorized person details, proprietor slash partner slash director details, employee details, other policy section details. ठीक है, ये करंट जिस स्टेट पे है, ऐसे स्टेट में ये नहीं रहेगा आपका पेज. जब आप पहली बार क्लिक करोगे रजिस्टर CB प्रोफाइल पे, अभी आप देख रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड है. जो CB प्राइमरी डिटेल्स से लेके नीचे टैब है अप टिल प्रोप्राइटर पार्टनर डिटेल्स, इट इज हाईलाइटेड एंड ग्रीन टिक्स है. ग्रीन टिक्स मीन्स कि आपने उसको ऑलरेडी फिल कर दिया है एंड यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, इन योर केस इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस विल नॉट हैपन. ओके, ये नहीं रहेगा आपका, रहेगा ये नीचे जो एम्प्लॉय डिटेल्स है ना जिस पे रेड क्रॉस है, ये रहेगा थ्रू आउट because you have not started it. Okay, starting with CB primary details, पहला फॉर्म है, पहला टैब है. ठीक है, आप एक टैब जब तक completely successfully fill नहीं करोगे आप नेक्स्ट टैब पे नहीं जा पाओगे. Alright, so now starting with CB primary details, the details that you need to enter are these. ठीक है, CB name जो आपका नाम कस्टमर ब्रोकर का नाम है, CB लाइसेंस नंबर जो आप यहाँ पे 11/ जो भी whatever जो आपका नाम नंबर होता है. ठीक है, पेरेंट पॉलिसी सेक्शन EDI लाइसेंस नंबर. पेरेंट पॉलिसी सेक्शन आई बिलीव आपको पता होगा जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो अंडर 7(2), दैट इज योर पेरेंट पॉलिसी सेक्शन. से फॉर इंस्टेंस अगर आप मुंबई में रजिस्टर्ड हो अंडर 7(2), देन दैट इज मुंबई इज योर पेरेंट पॉलिसी सेक्शन. इफ यू आर रजिस्टर्ड इन चेन्नई अंडर 7(2) बट you have an office in Mumbai under 7(3), you won't be able to do this as of now. Once this is launched pan India, okay, जैसा चीफ सर ने बोला कि 1-2 दिन में पैन इंडिया जब लॉन्च हो जाएगा, यू विल योर मेन पेरेंट पॉलिसी सेक्शन, से फॉर इंस्टेंस आप चेन्नई में 7(2) में रजिस्टर्ड हो और मुंबई में भी आपका ऑफिस है, देन योर चेन्नई ऑफिस विल रिसीव एन SMS हैविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड. हमारे पास ऐसे बहुत लोग आए कि सर हमारा पुणे में ऑफिस है लेकिन हमारा मुंबई में भी मेरा ऑफिस है, हमें नहीं मिला यूजर नेम एंड पासवर्ड. इन दैट केस नहीं होगा. अगर आपका 7(2) कहीं और रजिस्टर्ड है अपार्ट फ्रॉम मुंबई एज ऑफ नाउ, तो आपको अभी नहीं आया होगा SMS. सो यू डोंट स्टार्ट दिस प्रोसेस एज वेल. ओके, एज ऑफ नाउ दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट, हम मुंबई के लिए सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं. ओके, तो CB नेम, CB लाइसेंस नंबर,
पेरेंट पॉलिसी सेक्शन ईडीआई लाइसेंस नंबर इज, जो पेरेंट पॉलिसी सेक्शन ईडीआई में जो लाइसेंस नंबर जैसा होता है ना, अच्छा पेरेंट पॉलिसी सेक्शन नंबर के आगे में एक आई बटन है छोटा सा, वो आई बटन पे आप जब क्लिक करोगे ना तो वो आपको फॉर्मेट दिखाएगा कि इन व्हाट फॉर्मेट आपको ये फिल करना है। जैसा जैसा ईडीआई पे दिखाता है ना, जैसा ईडीआई पे शो कर रहा है एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपना लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आता कि किस फॉर्मेट में भरना है, यू जो गो टू द आई बटन एंड इट विल एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू हाउ यू नीड टू फिल इट, ओके। सो दैट इज द फॉर्मेट। देन सीबी इशू, लाइसेंस इशू डेट, लाइसेंस वैलिडिटी। नाउ वैलिडिटी आई बिलीव किसी की लाइफ टाइम होती है, किसी को डेट एंटर करना होता है, ठीक है। किसी किसी की लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, किसी किसी को एक्सपायर होता होगा, तो यू हैव टू एंटर डेट, सिलेक्ट जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है आप सिलेक्ट करिएगा उसको, ठीक है। अगर लाइफ टाइम आप ऐड करिएगा तो वो सीधा आगे चला जाएगा, अगर आप एंटर डेट पे करिएगा तो आपकी वैलिडिटी जहाँ तक है, फिर एक और कॉलम साइड में ओपन होगा, यू नीड टू एंटर दैट डेट, ओके। अगेन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पेरेंट पॉलिसी सेक्शन कहाँ, अगेन जो मैंने आपको अभी समझाया, पेरेंट पॉलिसी सेक्शन आपका कहाँ का है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, शो दैट द मेन्यू, हाँ दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमारे पास में 19 पॉलिसी सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड है इस ड्रॉप डाउन में, ठीक है। ये इसमें से आपको ऐड करना है। नेचर ऑफ कस्टम्स ब्रोकर इज नथिंग बट, अगर आपका कस्टम्स ब्रोकर प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है या एलएलपी चल रहा है या कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, यू नीड टू सिलेक्ट इट, ठीक है। अच्छा इसमें है कि अगर आप, इसमें भी अभी डिटेल्स है, जैसे प्रोप्राइटरशिप अगर आप ऐड सिलेक्ट करोगे, देख ओके डेट, ओके पैन नंबर, द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट अटैचमेंट, पहले है ना पैन, हाँ जैसे देखिए आपने पैन नंबर अटैच, पैन नंबर फिल किया ना, तो उसके बगल में आपको आएगा अपलोड पैन कार्ड कॉपी, सो यू अटैच द कॉपी ऑफ पैन कार्ड, स्कैन्ड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यही सब चीज़ों के लिए आप पहले से स्कैन करके रखिएगा, ठीक है। इसने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सो इट्स जस्ट शोइंग यू ऑलरेडी अपलोडेड, और व्यू का बटन आ रहा है, आपने अगर यदि ऑलरेडी अपलोड किया, यू कैन व्यू कि आपने कौन सा पैन कार्ड अपलोड किया है, कॉपी अपलोड किया है। योर जीएसटीएन नंबर, अगेन जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है पीछे लास्ट रो, कैन यू सी दिस कॉलम्स? Okay, now date of issuance of your first CB license is also needs to be entered, ठीक है। देन नीचे आई मीन मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन, कौन से एसोसिएशन से में आप एफिलिएटेड हो, और उसके बाद में योर मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ दैट एसोसिएशन, वो भी अपलोड करना है। दीज आर द टैब्स, ओके। ये टैब्स मैं इसलिए रन थ्रू फटाफट किया बिकॉज दीज आर ऑलरेडी मेंशन इन योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे वो है ना लिस्ट ऑफ द डिटेल्स विच नीड्स टू बी केप्ट हैंडी बिफोर एंटरिंग, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन से डिटेल्स आपको रखना है। एग्जैक्टली वही डिटेल्स के टैब हैं, आपको बस ओपन करना है और डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी है, यू जस्ट एंटर इट, ओके। इफ़ यू आर एंटरिंग इट इन द करेक्ट फॉर्मेट, करेक्ट साइज, जो इमेजेस अपलोड कर रहे हो आप करेक्ट साइज करेक्ट फॉर्मेट में यदि अपलोड कर रहे हो, दिस टू बी फिल्ड इन वन गो, यू जस्ट क्लिक ऑन सेव। देखिए द मोमेंट यू क्लिक ऑन सेव, आप देखिएगा तो वेट गो अप, ये सारे टैब्स आपके ग्रीन टिक आएंगे, ठीक है, सारे टैब्स। इसमें क्या है, इसमें व्हाट डज ग्रीन टिक्स मीन्स कि आपने सारी चीजें ढंग से भर दी है, मतलब वो पर्टिकुलर टैब्स आपने करेक्ट भरा हुआ है। अगर आपका सारा कॉलम टिक ग्रीन है, यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आपका कोई भी कॉलम टिक नहीं है ग्रीन, अगर वो रेड में हाईलाइट हो जाता है और नीचे एक एरर दिखाएगा कि व्हाट एरर हैव यू डन व्हाइल फिलिंग अप दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, फॉर्मेट में हो सकता है, उसका एक तरीका वो जो है जो फॉर्मेट में होना चाहिए वो नहीं होगा, साइज एक्सीड कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एरर आपको शो करेगा एट दैट टाइम। बट अगर सब कुछ ग्रीन है, once everything is green, then you can move on to next page. That means you have successfully filled all the information on the first page, which is CB primary details. Okay, this is the first information that is required. Now once you click on save, everything is saved, you move to the next page. The next tab is security deposit. Okay,
Now go. Acha. Now under security deposit tab, once you open this tab, there are two things. Okay. One, either you are an AEO LO. Okay. Either you have AEO certificate of logistical operator. Okay. अगर आप वो हैं तो you can avail that benefit. If you have availed that benefit कि आपने security deposit वापस ले लिया once AEO is awarded to you, then you select this option. Okay. If not, then you select the first option, which is security deposit. What happens is then you have to fill in your security deposit का entire details. जो भी आपके सिक्योरिटी, सपोज आपने बैंक गारंटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, एनएससी में सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, पोस्टल डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जिस भी फॉर्म में आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिया जाएगा अलॉन्ग विद द कॉपी एज वेल. उसको भी आपको स्कैन करके रखना है, वो भी आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है. सो से फॉर इंस्टेंस दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. जो भी आपने, जैसे भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल किया है, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप पे एप्लीकेबल है. आपने जो भी सबमिट किया हुआ है सीबी सेक्शन में वो आप सिलेक्ट करिए. Say for instance national saving certificate, then it again asks you for all the details. NSC account number, products, धीरे धीरे आराम से. NSC account number, your amount, जिस amount का आपने NSC दिया है, issue date, maturity date, ठीक है, account holder का नाम, post office branch name, जो भी whatever details pertaining to your सिक्योरिटी डिपॉजिट वो पूछेगा यहाँ पे. यदि आप बैंक गारंटी सिलेक्ट करोगे आपके बैंक गारंटी की डिटेल्स पूछेगा. आप फिक्स डिपॉजिट सिलेक्ट करोगे आपके फिक्स डिपॉजिट की डिटेल्स पूछेगा. आपको कॉपी भी अपलोड करना, जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करिएगा. ठीक है. दिस इज वन थिंग. अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देखी, एईओ एलओ की बेनिफिट आपने अगर यूज की है, देन यू सिलेक्ट एईओ एलओ. ओके. ऊपर ऊपर ऊपर. ये है आपका डिटेल्स. एईओ एलओ के फिर आपके एईओ के डिटेल्स पूछेगा. ठीक है. इसमें भी आपको एईओ की सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी. ठीक है. ऑल योर डिटेल्स एंड देन एईओ सर्टिफिकेट. ओके. नाउ वन थिंग, गो टू सिक्योरिटी डिपॉजिट. नीचे 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 एकदम नीचे. हाँ यहाँ. ओके. नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको ये लास्ट चीज बता रहा हूँ कि से फॉर इंस्टेंस आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी हुई है 5 लाख की. ओके. 5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, बट आपने एट वन गो नहीं दिया है, आपने 5 स्मॉल बाइफर्केशंस में दिया. आपने 5 बैंक गारंटीज दी 1-1 लाख की. ठीक है. सो यू नीड टू एक्चुअली एंटर डिटेल्स ऑफ ऑल दी 5 बैंक गारंटीज. ठीक है. 5 बैंक गारंटीज की आपको डिटेल्स देनी है. हाउ यू गो अबाउट इट और हाउ यू डू दैट इज, फर्स्ट जब आप ये ऊपर जा, जब आप ये फिल कर देते हैं ना फर्स्ट वाले में, से फॉर इंस्टेंस 1 लाख की पहली बैंक गारंटी, आपने उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए. देन यू क्लिक ऑन दैट ऐड. अभी तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसलिए तो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा ऐड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. जब आप डिटेल्स भरने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐड, आप वो नीचे आपकी ये टेबल पे रिफ्लेक्ट करते रहेगा. ये जो नीचे टेबल है ना, ये टेबल पे एक आ जाएगा, आपका पहले एनएससी का डिटेल आ गया. नाउ यू वांट टू ऐड द सेकेंड वन. व्हाट यू डू, यू रिपीट द सेम प्रोसेस. ओके. यू अगेन गो बैक टू द फॉर्म ऊपर और फिर से आप अपने दूसरे बैंक गारंटी का पूरा डिटेल्स करोगे और फिर ऐड करोगे. What will happen in once you click add, दूसरा भरने के बाद में वो पहले के नीचे एक दूसरा लाइन ऐड हो जाएगा, उसके भी डिटेल्स फिर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे. ठीक है. ऐसे करके आप 5 के 5 बार आपको ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी. ओके. और उसके आगे जब आप टेबल पे जाओगे ना, तो टेबल पे लास्ट में एडिट का भी ऑप्शन है और डिलीट का भी ऑप्शन है. कुछ गलत हो गया या कुछ नंबर्स कुछ ये हो गए तो आप एडिट भी कर सकते हो. इफ यू विश टू डिलीट दैट, यू कैन डिलीट दैट एज वेल. ओके. सो वंस यू फिल्ड ऑल दिस, अगेन यू क्लिक ऑन सेव. This is your security deposit details. Again same process will happen. अगर आपका सब चीज करेक्ट है, तो अगेन वही होगा, ग्रीन टिक आएगा सब में. ठीक है. एंड देन यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट पेज. ओके. दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल्स. द थर्ड वन, क्लिक ऑन सेव. ओके. इट इज इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, भरा हुआ है, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा था. नेक्स्ट टैब इज करेस्पॉन्डेंस डिटेल्स. ओके. जहाँ पे भी आपका ऑफिस एड्रेस है, जहाँ पे आपके सारे करस्पॉन्डेंस हो रहे हैं अभी करेंटली, वो आपको यहाँ पे फिल करना है. ठीक है. द डिटेल्स ऑफ ऑल योर करस्पॉन्डेंस. ठीक है. एड्रेस लाइन, जो भी एड्रेस है, जो भी आपका, जैसे हम नॉर्मल किसी फॉर्म में एड्रेस भरते हैं कहीं पे भी, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी भरना है. ठीक है. पीछे जाओ. इसमें एक एक्स्ट्रा, देयर इज वन थिंग विच यू हैव टू ऐड इज यू हैव टू अपडेट योर एड्रेस प्रूफ. ठीक है. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्सेप्टेड है. एड्रेस प्रूफ
के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वो लिस्ट जो है आप अपडेट एड्रेस प्रूफ जो नीचे टैब है ना उसके बगल में एक आई बटन है, अगर आप आई बटन पे जाओगे वो आपको पूरा लिस्ट बताएगा, ठीक है। दीज आर 11 डॉक्यूमेंट्स, इस 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है, बट यू हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट, तो वैसे ही सिलेक्ट करके आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। दैट एड्रेस शुड मैच द एड्रेस विच यू हैव फिल्ड ऑलरेडी, ओके। सेम थिंग, नाउ वंस यू डू दैट, click on add address. Once you fill the form, add the address. Again, that address जो है वो नीचे की टेबल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ इधर एक और चीज़ है, आप एड्रेस जैसे ही ऐड कर लोगे ना तो उस एड्रेस पे हु इज द कॉन्टैक्ट पर्सन whom can we contact on that particular address, उसकी डिटेल्स आपको टेबल के अंदर देनी पड़ेगी। आप वो टेबल के अंदर में देख रहे हो add contact person, there is a green tab, add contact person. Once you have filled the address and clicked on add address, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में आप उस पर क्लिक करोगे add contact person. इन्होंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है इसलिए ये शो कर रहा है, अदरवाइज अगेन एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको उस कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स, पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है इसमें, ठीक है। और डिटेल्स, ओपन दैट फॉर्म, या ये सारी डिटेल्स है, नाम, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, पर्सनल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, उनका कॉन्टैक्ट पर्सन का। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप स्कैन एंड गेट कीप रेडी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टेबल में मिल जाएगी, उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको स्कैन करनी है, ठीक है। वंस यू ऐड दिस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, यू क्लिक ऑन सेव, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा आपके उस टेबल पे, और लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन पे उसका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम उसका वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगेन उसमें सेम चीज़ है, एडिट बटन है, डिलीट बटन है, इफ़ यू वांट टू डू दैट यू एडिट इट, यू कैन डिलीट इट ऑल्सो एंड ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट पर्सन, ओके। सो यू ऐड द करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐड इट, टेबल में अपीयर हुआ, ऐड द कॉन्टैक्ट पर्सन ऑल्सो। इसके अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद जब सेव क्लिक करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन मेक श्योर दैट आपने कॉन्टैक्ट पर्सन भी ऐड किया है। Unless and until you do that, you won't be able to move to next page. Okay? So add contact person हो गया. You click on save. Same process. Repeat. Everything will be in green. Once everything is in green, you get your clue कि everything is correct. You move to your next page. Okay? Next one is authorized person details. Okay? Now whosoever जो आपने एड्रेस फिल किया, जो भी आपके CV लाइसेंस का जो एड्रेस है, हाँ, उसमें कौन है, हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन, यू नीड टू फिल इन हिज डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स पर्टेनिंग टू हिम, ओके। उनकी भी पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, उनकी भी फोटोग्राफ लगेगा, ये सब आपको स्कैन करना है, ठीक है। उनके पर्सनल, उनके जितने भी डिटेल्स हैं, उनके प्रेजेंट एड्रेस, उनका परमानेंट एड्रेस, सब आपको रखना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, इफ प्रेजेंट एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस, तो फिर वो एक रेडियो बटन है जिसको आप क्लिक करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। किसी नॉर्मल फॉर्म में होता है ना कि परमानेंट एड्रेस इज द प्रेजेंट एड्रेस, वो वैसे ही सेम फिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लिक पिन कोड वगैरह, अगेन इनका जो एड्रेस आप फिल करोगे ना, जो ऑथराइज पर्सन का एड्रेस फिल करोगे, उनका भी आपको एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगेन द एड्रेस प्रूफ वही सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आपको नहीं है तो ये आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको पता देगा कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड, ओके। नाउ इसके नीचे आता है व्हाट इज द कस्टम पास कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पर्सन। जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन है एट एन ऑफिस, उनका क्या कैटेगरी है, व्हाट इज द पास कैटेगरी, ओके। इफ वेदर ही इज एफ कैटेगरी और ही इज जी विद पीए, ठीक है। आप एफ कैटेगरी यदि सिलेक्ट करते हो तो उनके पास के डिटेल्स आपको पूरे जाएंगे, पूरे देने पड़ेंगे। जो ऑथराइज पर्सन होंगे उनके पास के डिटेल्स, एवरीथिंग, कस्टम पास नंबर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कस्टम पास, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टम पास, उनके कस्टम पास की भी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। ईयर ऑफ पासिंग रेगुलर 6 एग्जाम, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका जो भी है सिलेक्ट करिएगा आप इसमें से, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू है उनका, दी ऑथराइज पर्सन, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, व्हाट ऑल सर्टिफिकेट्स दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। If
if is G with PA, if you select G with PA, then okay, now your authorized person can be a G with PA in case the F category is either dead or retired, right? So we need that proof also. We need the date of death or the retirement of that authorized person, जो F category वाले थे, ठीक है, उनके details और उनका भी जो अगर if he is dead तो उनका proof of death भी आपको upload करना पड़ेगा, वो भी scan करके आपको upload करना है, ठीक है, और retirement की भी retirement proof also you need to upload. अगेन उनके पास डिटेल्स, इफ इज जीवित पीए, जैसे एफ कैटेगरी का जो था उनका पास डिटेल्स आपने फिल किया, वैसे जीवित पीए का भी आपको पास डिटेल्स फिल करना है. अच्छा, इसमें एक देयर इज न्यू थिंग, दिस इज पावर ऑफ अटॉर्नी. ओके, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की भी कॉपी आपको लगेगी. ओके, उनकी डिटेल्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी भी आपको पूरा स्कैन करके एंड देन यू विल हैव टू अपलोड दैट एज वेल. दिस ईयर ऑफ पासिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, upload educational qualification certificate, same thing. That's it. Achha, every time you fill all the details, you click on add. ओके, एवरी टाइम डायरेक्टली आप फिल करके सेव पे मत जाइएगा, वो सेव नहीं होगा, आपको दोबारा से फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा. इसके लिए जब भी आप फिल करोगे ना, उस पर आपको ऐड दिखाई देगा, ऐड कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, ऐड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आप हमेशा पहले ऐड पे क्लिक करिएगा, बाद में सेव पे क्लिक करिएगा, ठीक है. ओके, जैसे इसने अभी भरा, अभी देखिए आपको आप इफ एवरीथिंग इज इन ग्रीन तो उसने डिटेल्स करेक्ट भरे, मतलब इन करेक्ट फॉर्मेट एटलीस्ट भरा है उसने, ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करेगा. नाउ यू क्लिक ऑन सेव एंड यू मूव फॉरवर्ड. ओके, एक सेकंड. ओके, इसमें ना ये जो फॉर्म इसने भरा, तो दिस वाज वन एरर विच इज जो इसको फेस हुआ. थोड़ा ऊपर करना. इफ यू कैन सी, कैन द लास्ट रो कैन सी कि वहां पे एक रेड मार्क है, इट इज रेड देयर. कैन यू सी? गिव मी अ थम्स अप. कैन यू सी? ओके, ओके, नाउ ये रेड मार्क है, इसके नीचे लिखा हुआ है देयर इज एन आई बटन एंड सेज प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी. तो इसने ईमेल आईडी प्रॉबेबली गलत फॉर्मेट में भरा. अगर आप ईमेल एड्रेस भी गलत फॉर्मेट में भरोगे, सिस्टम विल कैच दैट, ठीक है, वो आपको सेव करके आगे मूव करने नहीं देगा. इफ इट इज नॉट इन वैलिड फॉर्मेट देन यू नीड टू चेंज इट. हाँ, ठीक है, ऐड इन अ वैलिड फॉर्मेट. या वो डिपेंड करता है आप किस कॉलम में आप ये भर रहे हो. फर्स्ट कॉलम में अगर आप सीवी प्राइमरी डिटेल्स में यदि आप भर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है. जैसे ये कॉलम अगर आप आओगे तो ये कॉलम आपकी एफ कैटेगरी या जीवित पीए कैटेगरी का है, तो उस पर्सन को किस ईमेल पे कांटेक्ट किया जा सकता है, हिज पर्सनल ईमेल आईडी यू वांट. ओके, ओके. इफ द नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटर द ऑथराइज्ड पर्सन. अगर आपका प्रोप्राइटर इज द ऑथराइज्ड पर्सन, यू क्लिक ऑन यस, तो आपको इससे क्या होगा, इससे आपकी डुप्लीकेसी बचेगी, आपको दो बार फिल नहीं करना पड़ेगा. अगर प्रोप्राइटर या ऑथराइज्ड पर्सन है तो प्रोप्राइटर के डिटेल्स, जो ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स आपने फिल की है ना, वो प्रोप्राइटर कॉलम में ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ इन केस योर प्रोप्राइटर इज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, यू सिलेक्ट अ नो एंड देन you go down and you fill in your proprietor details, ठीक है. Now this column is proprietor partner. Go up. This is proprietor partner director details, ठीक है. इसके पिछले कॉलम में we have filled authorized person details. Say for instance if the proprietor of the company is the authorized person, चेक अ बॉक्स, वो चेक करोगे, आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर नहीं है देन सिलेक्ट नो, देन यू हैव टू फिल इन द प्रोप्राइटर डिटेल्स. ओके, देन यू गो डाउन एंड यू
You fill on all these details, ठीक है? आपको अपलोड करना पड़ेगा उनका नाम, एवरीथिंग जो डिटेल्स अभी पहले भरते आ रहे हो वही चीज़ें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब में कॉमन है, पैन कार्ड कॉपी ये सब में कॉमन है, आपको सबकी हर एक चीज़ स्कैन करके रखना पड़ेगा, अपलोड करना है। अच्छा, उनकी कस्टम पास की कैटेगरी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है? सॉरी, नहीं, ये प्रोप्राइटर पार्टनर जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर फर्म है ना। हाँ, राइट। No, just the other partner details. It will automatically catch the authorized person. If there is one authorized person, it will automatically catch that. ठीक है? Okay, after that, after proprietor partner details, ठीक है, then you come to the next tab, which is employee details. Now all the employees, all your card holders, सबके details आपको fill करने one by one. ठीक है? If you have 10 employees, you have to fill in 10 details 10 times. ठीक है? All the employees needs to be registered on this. Change हो रहा है, अगर बाद में आगे जाकर change भी होगा, you have to change it, you have to update it. Okay? ऐसा नहीं है कि कोई 2 employee या 1 employee का भर दिया, no. ठीक है? You have to fill in the details of all the employees who are working. Who are the card holders? Okay? Who are the card holders? Yeah. You have not got the pass again? You have not applied for it? Correct. You have not applied it yet, or you are not planning to apply it at all? For a duplicate pass. But you don't plan to apply as well? The reason being? Reason what? He's not there with you, right? So you need not enter the employee details. Then he resigns from the company, right? He's no longer your employee, right? If he is no longer your employee, you need not fill the employee details. You need not fill his details under the employee details, correct? You need not apply. Your reason is valid, but then he no longer remains your employee, right? So you need not enter his details under your employee details, okay? Thank you. Yeah. Data getting what? Yeah. Uh-huh. Why do you want a signature to be scanned in this? Because it comes along with all the other data Uh-huh. of the concerned person. Correct. Then this is a threat to us. At what stage you feel that this is a data If you have leakage? the signature, if you have Correct. a PAN details, if you have registered email addresses, Correct. if you have our address, Right. residential addresses, Right. everything along with the signature of the bank, which Right. is attested. Right. So you really think that this cannot be a threat or cannot be misused? If See there's a that leakage in this aspect we data? have already that aspect we have already kept in mind, and that aspect is already covered in the portal itself. Okay, this can only be accessed. See, this particular thing can only be accessed by someone who has the login IDs and password of your own particular CB profile. Say for instance, you have created your CB profile and you have entered all these things along with the signatures, everything you have uploaded successfully, created your CB profile which has been validated, all right? Now, unless and until you have your own CV's profiles, username and password and login using that, and further to that, you have to enter your OTP as well, okay? So that registered mobile number, I believe the authorized person or the responsible person in the firm should have access to that particular mobile number, correct? If you're talking about backend, all these data Correct. are already I'm there, looking right? at the department side of it because there we don't have anybody known who's accessing our data. No, only department. My data, I have the username, I have the user ID, password, and the OTP will come to my mobile. I can understand. Right. But I don't have any access of who's going to be accessing the data. I have no information about the only department will access your data, No. rather apart from you. So there is no, using that this system is absolutely full and nothing can get leaked. See, online that Adit, audit. just a second. Adit. Sure. Can we just complete the presentation first? Sure. And We'll then just we complete the can, go presentation. ahead We'll come to your question. Okay. Okay. Okay, perfect.
ठीक है. Now same thing, same procedure to be followed. The employee details needs to be filled in, absolute. Okay. Then click on add employee. Once you click on add employee, again the data will be added in the table. ठीक है. Then again you follow the same process for another employee. You enter all the details, you fill in all the details, upload the documents. Again click on add employee, and then the data gets added. If you have number of employees, you have 10 employees. Under the table you will see the data of all the 10 employees. Okay. Once you fill in all the data, then you click on save. ठीक है. On the risk of being repetitive, I will again tell you, if you have say n number of employees, you have to fill in this form n number of times. ठीक है. In one form you cannot fill in all the employee data. Okay. Now once all your employees feature in the table below, okay, you click on save, and then again same process. If everything is correct, everything will be in green, you click on save, everything will be green, you move to the next page. The next page, okay, you need good internet speed as well. Okay. So yeah. One second. Someone in the back. Yeah, please tell me. Yeah, you in the back, right at the back. Mic. Okay, let's say I've entered a data and attached a file, PDF file, and later on, if I wish, and I've saved it. So let's say I've entered the data and I've attached a file and I've saved it and I get the green tick. Later on, I realize I need to change the PDF. So how do I do that? Do I need to edit or delete it and make a new entry? You can delete it and you can re-upload it. Because Against every column where you need to upload a particular document, either in PDF or in JPG format, next to that column, once you upload that data, you will get small buttons, radio buttons, where it says edit or delete. Okay. If you want to delete it and re-upload a new format, you can do that. Because I think if you edit, the attachment doesn't replace. No, it gets. See, I agree. I understand where you're coming from. See, what happens is that probably once you edit, okay, and then once you upload the new document, when you get back to the form, you will see a blank column, right? Yes. वो पूरा कॉलम ब्लैंक रहता है, वो डॉक्यूमेंट का नाम अपीयर नहीं होता उसमें, correct. बट अगर आप साइड उसके बगल में एक जहाँ पे अटैच फाइल का बटन है ना, हाँ, जैसे अटैच फाइल है, यू क्लिक ऑन अटैच फाइल एंड देन यू अपलोड दैट फाइल, राइट? जब सेकेंड टाइम आपने किया, जब आपने अटैच किया और अटैच पे क्लिक करके जब आपने अपलोड कर दिया, देन अगेन यू विल सी जब जस्ट द ब्लैंक कॉलम और बगल में अटैच फाइल होता है, राइट? यही रहता है. तो अगर लेकिन आप अपना कर्सर अगर आप सिर्फ अटैच फाइल पे मूव करके लेके जाओगे ना, तो अपने आप एक पॉपअप आएगा जहां पे आपको दिखाएगा कि आपने न्यू फाइल कौन सा अपलोड किया है. वी हैव एड्रेस दिस, दिस इज द इशू. ये जो न्यू फाइल का नाम है ना, ये उसमें आना चाहिए, उस कॉलम के अंदर में भी आना चाहिए जो न्यू फाइल का नाम है. लेकिन आप जब आप री अपलोड करते हो, जब आप एडिट करके दोबारा अपलोड करते हो, तब उसका नाम अपीयर नहीं करता, राइट? यस, करेक्ट. बट फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्ट अपलोड करोगे तो उसका नाम अपीयर करेगा. करेक्ट. हाँ, तो सेकंड ये हमने एड्रेस कर दिया ऑलरेडी. हाउएवर, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, जब आपने दोबारा भी अपलोड किया ना, तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है. आप जब उस अटैच फाइल पे कर्सर लेकर के जाओगे ना, तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा जहाँ पे आपका नाम उधर आ जाएगा. जो आपने नया डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका नाम पॉपअप पे अपलोड आ जाता है. अदरवाइज उसको डिलीट करके वापस से एंट्री कर सकते हैं. जी सॉरी. Otherwise, the second option is we can delete it and. बट अगर आप डिलीट करोगे ना पूरा, आप डिलीट करोगे पूरा, तो पूरा डिलीट हो जाएगा. अच्छा, ऐसा है. हाँ, आप एडिट कर लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है. ठीक है. वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, आप उसको चेक कर सकते हो अटैच फाइल पे जाकर के, वो नाम दिखा देगा आपको कि नया डॉक्यूमेंट आपने कौन सा अपलोड किया. ठीक है. The field which you are filling have to be saved, Right. and get back. Back option is there. You can go to back and check that the file upload. It will show you the new file. It does. But वो जब during the time of filling up, Yes. जब आप फिल करते रहते हो ना, उस समय नहीं दिखाता है. तो वो उनका वही क्वेश्चन था, तो उसके लिए once you filled everything and go back, it will show. Everything will show. Yes. आपने री-एडिट करके आपने दोबारा अपलोड किया, तीबारा अपलोड किया, but once you save the entire form, in the end it will show you everything which is valid and which is current जो आपने अपलोड किया हुआ है. ठीक है? All right. Now 2 मिनट मैं ये प्रेजेंटेशन फिल कर दूं, फिर we'll have a Q&A session. 2 minutes. Last column. This is last column. Okay.
After this is the last column where you need to fill in the other policy sections. Okay, now what is other policy section details? Say for instance आपने मुंबई में you have a license under 7(2), okay, but you have offices in Pune, you have office in Chennai, Nagpur, Cochin, Tuticorin, सब जगह आपके offices हैं. So apart from Mumbai, जो बाकी आपके offices हैं wherein you are registered under 7(3), you need to fill in details of those offices. Okay. सिमिलरली अगर आपका मुंबई में ऑफिस है लेकिन आपका प्राइमरी पॉलिसी सेक्शन पुणे में है, तो आपका जब पुणे ऑफिस डिटेल्स फिल करता रहेगा तो अंडर दिस अदर पॉलिसी सेक्शन आपके मुंबई ऑफिस का डिटेल्स इसमें आएगा. ठीक है. सो इफ यू आर 7(2) हियर एंड यू आर फिलिंग द डिटेल्स ऑफ अदर पॉलिसी सेक्शन, यू नीड टू फिल एवरीथिंग इन द, ये आपको डिटेल्स पूछेगा. ठीक है. दिस इज अ ड्रॉप डाउन wherein which policy section details you have to fill. Again इसको सीक्वेंस वाइज ही आप फिल करिएगा. ठीक है. आपके अदर, हाँ श्योर सही. फॉर इंस्टेंस आप मुंबई में यू हैव 7(2) लाइसेंस अंडर 7(2) यू हैव इन मुंबई. ठीक है. बट आपके ऑफिसेज मुंबई के अलावा इंडिया में और भी जगह हैं. कांडला में हो सकता है, गुजरात कहीं पे, पुणे, चेन्नई, साउथ, जहाँ पे भी हो सकता है. आपके 5 और ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, बट आप 7(2) आपकी मुंबई में. ठीक है. सो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस एज ऑफ नाउ. CB profile. Later on everyone can fill, but right now you can fill this entire form. जब आप अदर पॉलिसी सेक्शंस में आएंगे तो से फॉर इंस्टेंस आपके 5 ऑफिसेज हैं अदर अपार्ट फ्रॉम मुंबई. टोटल 6 ऑफिसेज हैं, मुंबई को अलग करके 5 अदर ऑफिसेज हैं. तो मुंबई के डिटेल्स तो आप अभी तक फिल करते आ रहे थे शुरू से अभी तक. आपके सिर्फ मुंबई ऑफिस के डिटेल्स ही अभी तक कैच किया सिस्टम ने. अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस कॉलम, योर अदर पॉलिसी सेक्शन डिटेल्स आर ऑल्सो कैप्चर्ड इन दिस पोर्टल. ठीक है. तो अगेन इसमें कैसा हुआ, यदि आपके मुंबई के अलावा 5 और ऑफिसेज हैं इंडिया में, तो आपको 5 ऑफिस के एंटायर डिटेल्स इसमें फिल करने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ जो चीज़ें आप मुंबई ऑफिस के लिए अभी तक फिल करते आ रहे थे ना, से फॉर इंस्टेंस ऑथोराइज पर्सन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, वो आपको अदर पॉलिसी सेक्शंस के भी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे. ठीक है. और डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा. व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव स्कैन्ड एंड अपलोडेड यू हैव टू डू फॉर अदर पॉलिसी सेक्शंस ऑल्सो. ओके. And that has to be done everything. Like employee details भी अगर आप other policy sections के भर रहे हो, तो other policy में अगर आपके 10 employees हैं तो other policy section के एक ऑफिस में 10 employee हैं, तो उस ऑफिस के भी 10 employee के डिटेल्स फिल करने. फिर then you go to the next policy section, फिर उस policy sections के सारे डिटेल्स फिल करने. ओके. So the other policy sections, if you select from this drop down, इसमें मुंबई फीचर नहीं करेगा. जब ये पैन इंडिया जब ये हो जाएगा ना, तो जब अगर आप प्राइमरी पॉलिसी सेक्शंस, अगर आपका बैंगलोर है, अगर उधर आपने बैंगलोर सिलेक्ट किया है, तो इस ड्रॉप डाउन में आपको बैंगलोर नहीं दिखेगा. अभी के लिए इस ड्रॉप डाउन में आपको मुंबई नहीं दिखेगा, बिकॉज मुंबई इज ऑलरेडी सिलेक्टेड और मुंबई के डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं. ठीक है. तो आपका जो अदर पॉलिसी सेक्शन है उसका आप कोई भी ऑफिस सिलेक्ट करो इसमें. नाउ वंस यू सिलेक्ट दैट, यहाँ पे नीचे एड्रेस लाइन आ जाएंगे. ठीक है. अगेन सेम डिटेल्स हैं, आपको सारी सेम डिटेल्स फिल करनी है. गो एक चीज, इसमें एक केस सिनेरियो ये आ सकता है कि वेरिन यू हैव ऑफिस ओनली इन मुंबई, यू आर नॉट ऑपरेटिंग एनीवेयर एल्स इन इंडिया. ठीक है. यू हैव ऑफिस ओनली इन मुंबई. तो ये सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछता है, आर यू वर्किंग इन अदर पॉलिसी सेक्शन इन फॉर्म सी अंडर रेगुलेशन 7(3) ऑफ CBLR 2018. If you have other offices in India apart from Mumbai, you check a yes. If you click on yes, तब rest of the form open होता है. अगर आपके पास सिर्फ मुंबई में ऑफिस है, you click on no, it will take you to the final section. You save and submit your form, the entire form is done. ठीक है. But if you have other offices apart from Mumbai, you have offices in other cities of India, you click a yes. ठीक है. Once you click a yes, you get the form. ठीक है. अदर पॉलिसी सेक्शन ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके फिल इन दी एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, एड्रेस प्रूफ. अगेन फिर वही आई बटन है कि कौन से एड्रेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो एज एन एड्रेस प्रूफ. ठीक है. अपलोड दैट. वंस यू डू दैट, क्लिक ऑन ऐड एड्रेस. ठीक है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे भी आपको ऐड बटन दिखेगा ना, पहले डिटेल्स फिल करके ऐड पे क्लिक करना. ठीक है. उसको स्किप करके मत जाना. क्लिक ऑन ऐड एड्रेस, नीचे टेबल में आ जाएगा. ओके. वंस नीचे आ जाएगा, इसके अंदर में फिल वन, एक बार फिल करना.
Okay, till the time it's buffering, the basic idea you know कि form fill करके, one second, form fill करके, once you fill the form, ठीक है, again वो नीचे जो table है ना, उस table पे आ जाएगा. See, again, you get the नीचे table पे आ गया, जब उसने fill किया नीचे table पे आ गया, उसके आगे का आएगा add contact person details. Now in that office, जो भी contact person है, फिर आपको वो click करके उसके contact person के details fill करने हैं इसमें, ठीक है? Entire thing, personal address, PAN, signature वगैरह सब लेगा, photograph, signature, everything you need to scan and do this. This has to be repeated for all the other policy section offices. जितने भी आपके offices हैं apart from Mumbai, सारे offices के लिए ये exercise repeat करने, ठीक है? Once you fill in all the details, your final step, you have to fill, na? You can't save, na? Fill in fast. Yeah. Can you do that? हाँ तो वो fill करना, fill कर दो यार. This is the last form which you need to fill. Once you fill everything, and then after this, the last button, the radio button is save and submit. You save all your details, everything is correct, everything will be in green. ठीक है? Once you click on save, if everything is green, everything you have filled in correctly, click on save and submit. This is your final step. Once you click on save and submit, you will get a final screen which will tell you, go to the PPT, you will have a PPT. Got it? Okay, this is the final page. If you have submitted successfully, you will see this final page. Okay, सारा step करने के बाद में it says thank you for registration. Your application number is so and so is under process. Status will be shared on registered phone number via SMS. Okay, once ये जो बीच में number दिख रहा है ना, this is your UIN. This is your unique identification number. Okay, you need to keep this. ये चीज़ ये आपको SMS में भी आएगा. Again on your registered mobile number, on your IceGate registered mobile number, the same SMS. You will receive the same SMS कि आपका application is in the process. Once it's processed, again आपको SMS होगा, email shoot किया जाएगा. Once it's processed, फिर उसके आगे के steps फिर आगे follow करेंगे. As of now, this is the final step. This is the final step till which आपको यहाँ तक पहुँचना है. ठीक है? You have to generate this UIN. After filling all the correct information, correct, valid and applicable information. Okay? जब आप वो कर लोगे, finish कर लोगे, ये UIN generate होगा और ये UIN generate होने के बाद आपके साथ साथ SMS भी आ जाएगा. This is your final step. Once you receive this, you have successfully created your CB profile. So your part is done as of now. यहाँ तक के लिए, ठीक है? So this entire thing, now once you have done this, CB profile is created. All right? Done. So this presentation or this process ends here. Okay, I'll throw the floor for Q&A session. So anyone who has, yes. So there are in the Can you CB please primary stand, can you details. please stand and ask? Everyone can see it. Yeah. In CB primary details, there are two dates: CB issue date, custom broker license issue date, and custom broker license first issue date. Yes. If there is any reconstitution of firm is there, so what that dates will be? We should put the date. The first issue date is the first license which has been issued, even before reconstitution. That is before reconstitution, Yes. right? Absolutely. And the before that there is a one custom broker license issue date. Yes. So in that which date it should The be? current license details which you are filling in. The license Date, details. I am Exactly. asking. The license details जो आप fill कर रहे हो, उस हाँ. license copy पे आपको एक issue date होगा ना? हाँ, booklet पे जो आप issue date booklet पे जो आप issue, जिसकी भी आप details fill कर रहे हो, उस पे हाँ. एक issue date होगा ना? Yes. वो date आपको देना है. Under license issue date. Okay. The date of the issuance of first license is before reconstitution भी अगर आपका license था और उसमें जो आपका पहला सबसे पहला license जब आपको issue हुआ था, वो date आपको वहाँ fill करना है. Okay. ठीक है? लाइसेंस इशू डेट इज जो लाइसेंस की डिटेल्स आप फिल कर रहे हो, जिसकी कॉपी आप अपलोड करोगे, उस कॉपी पे एक इशुएंस डेट होगा ना, वो डेट आपको डालना है. Second question, there is a drop down in authorized person. If person has
passed the exam in 79 or 76, there is a no option of drop down menu. Drop down वो menu is drop available. down में 1980 के पहले Yes, का नहीं है ना? yes. हाँ, we have raised this query. ये patch है, we are creating this patch. 1 or 2 days we'll be able to solve it. 1980 के पहले का नहीं है. Yes, The year yes. of passing the educational qualification. Yes, yes. We have it. Yeah. Thank you. Sorry. Exactly. Can you repeat your question? The second question. Second question I have asked regarding regulation 6, Right. where there is a drop-down menu for a year which you have to select. It is showing from 1980. Suppose person has passed the exam in 76 or 79. There is no options available to select that year. So we are not able to process that application. Correct. Agreed. So that is the You question. understood the question? So you ask the passing date and passing year. Right. Then what should be done? Earlier 2000, there was no written examination. Right. So the earlier people has been passed, they had done the oral examination. Then why you need to enter the year of the passing and upload your certificates? Then what to do? Uploading educational certificates, Yeah. right? Yeah. So you don't have that educational certificate as of No, now? because earlier there was no condition in that. No condition at all. But some, I mean, 10th pass or 12th pass will be there, no? So earlier prior to 2000, there was no requirement for educational qualification that he needs to be pass 12 pass or BCom or graduate or something. It was not there, and that was one part. Second part is that the examination, there was no written examination in earlier days. It was only oral examination. In CHLR 1984, prior to that I'm saying, prior to CHLR 84 came, it was only oral examination. But exam was there, right? Written or oral? Oral, Either oral, exam yeah, was there, right? So year of passing will be? Okay, so for the first query, wherein if you are asking us about the date of passing of that particular examination, the examination can be written or oral. So you can mention the date as the passing of oral examination in case there is no written examination at that particular point of time, first thing. And after the written examination and oral examination, both have come into picture, you can update the date of written examination accordingly. First thing. Secondly, regarding educational qualification, we have already been informed earlier saying that at that time there is no need for any 10th or 10+2 educational qualification at that time. So in that case, in case you have been employed at that particular point of time, we request you that the highest educational qualification you had passed at that time, you can upload that particular document and we'll be considering that. Okay? I hope that answers your queries. I'll just repeat what sir has explained. I'll just repeat. You have asked me the question, right? No, you have asked me the question, right? So I'll just repeat the answer what sir told is, see, first question that you asked, that there was no criteria of a particular educational qualification, right? So for that, what you can do is under the drop-down menu of the educational qualification, right at the bottom you will find other. There is an other in the qualification drop-down, okay? BSc bachelor degree, 10+2, 10th, then there is other, okay? So if you fall under that criteria wherein there was no qualification required, at that particular time, whatever was the highest qualification that was there, I mean, which you have passed. Say for instance, you have passed only 5th standard or say 6th standard, okay? So you upload that particular certificate. You choose other and then you upload that particular certificate. Sorry, why? Just 1 second. But you can enter at least when you select others, it will ask you. Can you do that? Educational cert. Just one clarification, please. One second. Please settle down. 1 second.
If there is a problem, I've been appraised that there is a problem with uploading this particular educational qualification, especially when some of you guys have passed this exam or there is no requirement at that particular point of time. We would consider this particular thing, probably we might make it optional within the form itself, so that those of you who have joined a particular CB firm before, there is a requirement for passing this particular examination to hold a pass or a card holder or for being a card holder. I think that will help you. Okay, I hope that answers your query, right? Yeah. I'm sorry. जी कैटेगरी का पासिंग का रिजल्ट का कॉपी मिल नहीं रहा है, ना एक्सेशन में मिल रहा है ना कस्टम में मिल रहा है, तो उसमें क्या क्या अटैच करने का? जी कैटेगरी का एग्जाम का रिजल्ट बोल रहे हैं। एग्जाम का रिजल्ट एंड ओरल का 96 97 एग्जाम रिजल्ट ओके। जी कैटेगरी का एग्जाम रिजल्ट का अभी वी आर नॉट आस्किंग यू टू अपलोड दैट पर्टिकुलर कॉपी, राइट? इफ यू हैड सीन द फॉर्म, देयर इज वी हैवंट रिक्वेस्टेड यू टू अपलोड एनी पर्टिकुलर result copy. We have only asked you the year in which you had passed that particular exam, and that detail would be with the department for sure. So whatever detail you are filling in, that will be verified by the department. Okay? आपने ये फॉर्म भरा है क्या सर? उनको बुलाइए। आपने ये फॉर्म भरने का ट्राई किया है क्या? आपने स्टार्ट किया? अच्छा, पासवर्ड है, लेकिन आप वो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे हैं ना, एक सेकेंड आपको जो अभी डॉक्यूमेंट्स बोला है ना, वो आप डॉक्यूमेंट्स पहले ले लीजिएगा इनसे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो लिस्ट में दिया हुआ है। मेरे पास सब है। करेक्ट। वो लिस्ट देख लीजिएगा। वो लिस्ट में नहीं है, वही तो सर बोल रहे हैं, वो लिस्ट में नहीं है। Okay. In fact, whatever. Excuse me, sir. हाँ सर, मैंने फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे था उसमें वो जी कैटेगरी का रिटर्न या ओरल एग्जामिनेशन का फॉर्म रिजल्ट वो अपलोड करना था, उसके बगैर फॉर्म्स आगे जा रहा नहीं था। Okay, what we'll do is, whatever issues in case you are facing with respect to uploading a particular proof, you please mail them to on the email ID which we had given, the help desk email ID. Okay? And in fact, what we are trying to do is, in fact, the reason why we are holding this particular program is that we have to identify the issues being faced by you, and probably wherever we feel that the issues are genuine and which are difficult for you to upload or get a particular certificate at this point of time, we'll probably try to make it optional within the form itself. That is something that is already under consideration. So what we would request is that you mail us your query along with a screenshot. Whatever difficulty you're facing, that has to be very specific for us to take action. Okay? I hope that is not too difficult for you guys. Right? Because that will be on record also, and for us also, we'll keep track of what all changes we have brought based on the feedback which we have received from each of the customs brokers. Right? Can you display the, is it there in the presentation? Huh? Help desk? We'll circulate that to BCPA. Can we do that, Dushanji? And you can send it across to everyone else. So it's there in the public. Yeah, it's there in the public notice anyway. Public notice, it is there. Yes, yes. Okay, what we'll do is, in fact, for all these issues pertaining to dates, wherein licenses have been issued prior to 1950 or exams have been passed prior to 1980 and all, we'll increase the dates accordingly within the fields itself. And even in the license, there is
the exact date is not available. Even with the customs department, the exact date of issuance of the license. So the license was issued in 1917, 17. We don't have that date. 1917. Yeah, 17. Haan, 1917 I said. Yeah. Yeah. But can we do that? Probably you can, if that is actually the case, and if you are saying, I'm just going by a word saying that this particular date is not in the file also, Right. in that case, you might choose to fill it as the 1st January 1917. And by the way, all the data you have filled in your CB profile, that data comes for verification, for validation with the CB officer. Right. So he'll be able to check in the file, and if he actually sees that there is no such date, then it should be okay. He'll validate the date accordingly. So if you fill 111917 as the date of issuance of first license, that should be okay. But on the other hand, if the officer sees that the date is actually there within the file, so let's say 1st of May 1917, so he'll send you a deficiency memo, or he can issue a message to you saying that this is the date, and you can update it accordingly. That's fine. That will work, right? That's good. And one more question. So when there is a F category pass in a partnership firm, there is no power of attorney required for an F category person who is a partner also. But the document also asks for a power of attorney issued. So Power of that attorney for a F category, the person who is a partner and who has passed the F category exam, he is not required to have a power of attorney in case it's a partnership firm. Okay. So, but the Note kar lena. document requires the power of attorney to be uploaded. Okay. If the partner himself is a F category person, in that case there should be no need as such. I agree with you, and in that case you might upload the partnership or the copy wherein this particular person has been declared as a partner. If you upload that, that should be considered. Okay, fine. Thank you. Thank you so much. When you select the partnership firm, there is an option coming active and inactive. So what does that mean? It is a non-working partner and partner, working partner, or what does it mean? Can you show? Active or inactive is executive and non-executive only. It's working or non-working. That is what we had in mind while making this form. Okay, thank you. Okay. I would take some questions from the back because we have been focusing on the front. So one question. Yes, please go ahead. Under adding the employee section, pass holders, there is a field called issuance of date of issue of custom pass. So is that the renewal date that we have to mention, or the initial date when it was issued? Whatever is the latest date wherein you have got your pass, that particular date you can fill. You mean to say renewal, last renewal date? Yeah. Is there an option for renewal which you had given? Is there an option for renewal which you had given? No, right? So initial pass date you mentioned. You can upload the last renewed date also, because we have all the data earlier to the renewal also. So that shouldn't be an issue. You can upload the date when your pass was renewed again. Okay? Okay, and there's also a field called DIN status. So is that, can we attach an MCA copy of the status? From What status? Sorry? DIN status. DIN status, yes. Yeah. So MCA. Yes, that will work. Okay, thanks. So it is again related to reconstitution of the license. Suppose the license reconstituted, why do you require this prior license, which has already been surrendered to the customs? We are trying to, if you had seen one of our slides, wherein we have said that we'll have all history and archives and database. So for a particular customs broker and all the employees that he has employed, we are trying to have a history of them also. So that
whatever for the future, see, let's say this is more useful to the department, I would say, in terms of offenses. So we'll have all the data pertaining to a particular CB and all its employees. And that is the reason why we are asking for reconstitution, if there is any reconstitution which has taken place earlier also. And suppose the same details are not available? Sorry, same? Same details are not available? I think that should be available with you. Oh, we'll try to get it, but suppose if they are not available? That's not You an can, issue. you can get the same from the CV department as well. You can, those are available in the section for sure. In case those are not readily available with you, you can come to the section probably. Oh, thank you. So we have received a letter of lifetime, but our pass validity is till 2026. So what should be the validity when we fill in the form? Which pass validity, ma'am? Is it a H custom card or? pass, custom pass, H, N, G, and F, all three. Okay, H card is valid only for 5 years, so that is not something which we can do anything with. But your license has been made given lifetime validity in Mumbai, Yes. right? And your F card also accordingly has been made lifetime, and your G also. Okay. ठीक है? So what should we fill in the lifetime only? If you are lifetime, there is an option for filling in lifetime. For Okay. the F, G and your license, you will fill in as lifetime, but for your H card holder of a particular employee, you will fill the date of date which is actually mentioned on your H card pass. Okay, and F and G lifetime will do. If you had been given a lifetime validity, that is what you would fill. Okay, thank you. In the end, that guy is waiting last. Okay. Last 5 question, okay? Okay, ma'am. Once in last one. Sir, hello. Sir, in the director list, our MD does not have a educational certificate. Though it is very old one. Actually, he passed in 1955, and he does not have record. So what will we do? I think. Can we declare on our letterhead with director signature and submit? See, educational certificate is something which is very basic, I assume, and every particular customs broker or its director or partner should have, is what I believe. But if you are not able to get one, probably he or she can declare it accordingly, give a self-declaration and upload it in the portal itself. And whether that is to be accepted or not, that probably you can leave it to the CB section who is actually validating the particular data. Okay, thank you, sir. Sir, एक मिनट क्या है दोबारा बताइए, सॉरी. हाँ हाँ. See, F category का ये है कि the point is F category person can also be employed by a customs broker, right? ठीक है. In that case, but there should be a power of attorney for him to act accordingly. But वो तो बनना चाहिए ना. No, if the F category person is the person on behalf of whom or on the strength of which the license has been issued to the customs broker, I understand your point. But there can be a F category person who is not actually the partner or director of the firm also, right? So in that case, he should have a power of attorney. That's what I'm saying. तो इसलिए पूछ रहे हैं हम पूरा ऑनलाइन लेके आ रहे हैं so that you actually need a power of attorney to handle, right? मतलब आप बताइए आपके लॉजिक से क्या लगता है आपको? होना चाहिए ना. G card और F card में क्या डिफरेंस? Why should a G card person have a power of attorney and not an F card person who is not an authorized person? होना तो चाहिए ना. ठीक है. So probably we are trying to streamline the system now, so it will only help you and us then. Now this is what we call a standardization of process. Now this will be standard process. Okay, जो भी पूछ रहे हैं वो standard. The one on the last row. In the back, yeah. Last one.
माइक पहुंचे माइक उधर तक जाए Good evening, sir. Good evening. Sir, we are AOLO, and I am referring this software right now. In that we have two options. One is we have to choose AOLO, or another one is we have to fill the details of NSC. Which one we have to choose? Because we have given NSC also, and we are AOLO also. Okay. If you refer to the AEO-LO circular, I believe there is a point where which mentions that if you are a AEO-LO, you don't need to submit this BG or NSC or for this particular file. So I believe you haven't utilized that particular option. So we have actually, this is first, initially we have given, then we have got the AOLO. And now, still, and this time we have done the renewal. That time also we've written the application, we have written the VR AOLO, then also we have to submit. If you are a AEO-LO, you will select AEO-LO within the portal. And you will fill the AEO-LO details as long as that AEO-LO certificate is active or it's valid. Okay, but that means, we have given the security also. That detail, where we have to submit then? But once you have submitted the AEO-LO certificate, I believe you could have asked for refund of that particular get that back, get that NSC or BG back from the department. You didn't need to have it with the department in the first place then. Okay, thank you so much. Last two questions only, please. Policy section like Bangalore or anything. So now we don't want to do anything, right? So then when it is implemented in all India basis, the parent session need to do all this process and then add Mumbai as the policy session. So license issued from another policy session, people should not do anything now, right? What we have done currently is that we have opened the CB profile first module within Mumbai as a pilot to in fact identify what queries are arising and what issues are being faced. Because Mumbai is the largest CB section where we have over 1272 licenses here. That is the reason why we have started here to correct any deficiencies which may arise in the system and to bring about patches based on your feedback so that we can make it easier across the other policy sections. So that's what we are trying to do. So whoever is registered currently under 7.2 within Mumbai is required to register under the CB profile module as of now. We will be rolling out the CB profile module within the next couple of days across all India. So once we release that module all India, they'll start filling the data. Sir, I have a question. See, we have filed this data, one director's details we filled in, and then we moved to the employees' details. There also we could only file one G card holder's data. And then we came to the submission level, we submitted it, and we got the UA number also. Now we need to add other directors' details and other employees' details, card holders' details. How to go about it? Do we have to delete all the data and You have already submitted the form, right? Yes. And you had got a successful UIN number. Yes. So after that, your application comes back to the officer's dashboard. The officer will send you back your application because he would realize from the file that you hadn't filled in your other directors or employees' details. So once he sends you back that, you'll be able to edit the form. The form will be will not be freezed at that particular point of time. You can start editing the form, fill those details also, and then send back. Thank you, sir.
Last two Sir, questions I take. yeah, okay, thank you. So my one question, this is a module 1 wherein we have to get register ourselves. So similarly, module 2, module 3 and module 4 are going to implement by the custom. Is there any provision wherein we can apply custom passes directly in those modules? Yes. The presentation, in fact, if you had referred to the presentation, there is a module 2 and there is a module 4 also, which pertains to the customs brokers. All the applications which you are required to make under CBLR 2018, all those applications can now be made online once this CBLMS portal comes up and all the modules are ready. So in fact, module 2 is called e-applications module, wherein all the applications which you are making currently for issuance of passes and renewals, surrenders and all that, all of them would be brought online. And module 4 would be where you can, or new applicants can start applying for CB licenses, and you can give intimations under Form C. All of those would be in module 4. Okay, thank you, sir. Last question. Hello. Yes, sir, we have other policy, other branches where two of our branches that license validity is expired because we don't have operations there. And one of the branches is valid license, but there are no operations or no office now, we are closed down. So in that case, we should report this? I'm sorry, I'm not able to hear you properly. Can you be a little louder? We have two branch locations where license was granted and that is expired, validity is expired, now it is not valid. So should we report in this details, those branches? Your license has expired already, right? Is there an option? That branch. Yeah, for that branch. Yeah. At a different policy section. Yes. Do you have the option to revive it back? No, no. No, right? No. You have surrendered your license? Actually, in this only validity is expired, so. No, so once the validity is expired, all the corresponding passes and the license copy, you are supposed to surrender it to the concerned policy section. So in short, let me just tell you, since the license is no longer valid, you don't need to fill in any of the details here because you don't intend to use it at any point of time, and neither would it be active from the department side. Okay. Right? And second case, one policy that is a branch, license is valid, but there are no operations, no office staff, no office because it is closed down there. So in that case, should we report and what details we can fill? There is no person at all, you are saying? No, because there are no operations, everything is closed down, but only license is valid, that's all. If the license is valid and there is no contact person there, you can fill in the contact person who is available here itself. Okay. But then if ideal situation would be to surrender that license since you don't need it and you don't have any operations, right? But for this purpose, what should be the right? Are you going to surrender it? Yeah, we'll have to surrender because we don't have. My suggestion would be to surrender that particular license and you don't need to fill those details here. Okay, okay. Thank you. Thank you. All right, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, before everyone leaves, I just want to sum up 2 or 3 things. Okay. The first thing is I request Dushanji to actually share all the documents and the Google spreadsheet link, which we are going to share. Okay. Please, it's a request to everyone, whoever is facing the problem of username and password not received on their registered mobile number, please enter your data in that particular spreadsheet so that we can collate the data and we can actually resend those SMSs to you after validating. One. Now, second thing which I request is if you face any sort of issues, any queries, please send an email to the help desk email, CBLMS help desk email. The email address is mentioned in the public notice. Okay, please go through that. The third thing which I want to tell you is please share all your queries, everything in your BCBA WhatsApp group. Do you have I believe you have a feedback WhatsApp group. Please share everything so that we have a collated data. We'll have all the queries at one place and which will be sent to us. Okay, so the resolution can be done at one go. Okay, not in pieces, in bits and pieces. That's the other thing to do. The third thing and the most important, I want to tell you, please exhaust all your options. Check with the BCBA resource person, put it on WhatsApp group, send us your email,
fill the spreadsheets, check online, go through our user manual, FAQs, videos which we'll be uploading. Do everything, do every bit before visiting us. Before visiting Custom House or before visiting CBLMS help desk, okay, make sure that you exhaust all your options. 99% of the time you will get your resolution via these methods. Our prime objective of creating this portal is for you to visit Custom House at the minimal, okay, and we wish to actually keep that going in the beginning itself, okay. So please keep that in mind, exhaust all your options, go through all these modalities and then come to us. If you don't find a solution by going through all this, then come to us, all right. In the last, I would request Mr. Neerav Thakkar from BCBA to give a vote of thanks. Please give a big hand, please. Before him, just one, regarding the emailing your difficulties which you are facing, the help desk email ID, if you guys could note down, it has already been circulated in the PN, but it would be better probably if you could note down the email ID where you can mail your queries, very specific queries, including the screenshots, please, so that will actually help us correct whatever difficulties or issues which are arising in the system itself immediately. It's CBLMS hyphen help desk @gov.in. @gov.in. I hope that is clear. I'll ask Dushanji to circulate the PN again, and you guys can refer to this email ID within the PN also again. Okay? Thank you. PN, it's in the FAQs as well. The email address is also mentioned in the FAQs. If you'll go through the FAQs, you'll find help desk email ID also there. Okay? Please go through that. Okay. Mr. Neerav Thakkar, please. Good evening. On behalf of President Shri Dushyant Bulani ji of BCBA and Managing Committee members, it is my privilege to present the vote of thanks today. We've had a packed audience, and this is possible because of Shri P.K. Agarwal ji, the Principal Chief Commissioner of Customs, New Custom House, and Shri Sunil Jain ji, Chief Commissioner of Customs. Their pivotal role in formulating and implementing the CBLMS project at Mumbai first is actually a privilege for all of us. Customs, as we know, has always been in the forefront in technology, and this project will have far-reaching benefits for the CB fraternity. We thank Additional Commissioner Dr. Deepak Sharma ji for organizing this seminar on this most important topic of CBLMS for the benefit of our members. Our sincere thanks to Deputy Commissioner Shri Ashok Chakravarti ji, Dr. Mewaram Ola ji to provide an in-depth presentation with the help of Mr. Aditya Mahato and Mr. Rodrigues, which has cleared most of the doubts of our members. We thank New Custom House for providing this auditorium and the arrangements even for additional members because of shortage of space here, even outside, even in the other room. Most importantly, the technical staff for all these arrangements, and from BCBA, Mr. Paresh Thakkar and Mr. Manohar Patyane, along with the BCBA staff for outreach of this program. And most important, our audience, with your question and answers and with this massive attendance today, this shows a positive step in onboarding the CBLMS. So we thank you all once again, and please join for snacks. Thank you.